Manmadam, Manmadam, Arosham Pratham Padam. Island. Number of islands. Number of islands. Number of islands. Okay. And I have to reduce its size. हेलो हाय ब्रो. ब्रो थंबनेल बहुत अच्छा है. थैंक्स यार. थैंक्स समित. थैंक्स बड़ी. सीख रहे यूट्यूब. हाउ यूट्यूब्स exactly. Okay, today's stream is also gonna be so boring. Today's problem is number of islands. It's a very famous problem and I don't remember. I do remember one time I've been asked with this problem. So there are this number of islands and we have to form an island. So based on this, array, yeah, how's the fuck it's looking? Okay, there is something that I have added. Hmm, what is this and this? And this is also connected.
Arosham Prachampanam. So this is literally a one island. So this is one island. Okay. Then we need this. So this will copy it here, paste it here, sorry. And then this it is diagonally connected, so this is not connected. So this is one island. Okay, this single one is one island and this is another island. So output is 3, output is 1. Okay, correct output. Yeah, output is 1, output is 3. Now the real question is how. It's a problem number 200 and uh, so this is the number of islands int and int is output. So it's a DFS. We can use DFS. We can I should like from my stream. We can refer this our problem solution that we did. Okay, it has this and this. So we have to use a loop over here. So we have to iterate on all of this. So we can start from this loop as this is a 2D array. Okay, so we can start from here. Input grid is a 2D array. Yeah, it's a 2D, it's a char array. Don't forget that. And we can start from here. And then from here let me fix this. Dr. Trust. हेलो ब्रो भाई कल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यार विदाउट द हेल्प कल का क्वेश्चन वाज लाइक नॉट एन इजी प्रॉब्लम दैट्स फॉर श्योर so see this I use this approach I created top bottom because top and bottom that's the only concern point where I was actually stuck how I can go top, how can I go bottom, left and right. So simply I created this individual arrays and adding those like top 0 and top 1. That means it's going top, then bottom, then left and then right. And we'll start from the first index what they have given. And then simply loop on those
it will automatically loop on those, because every DFS function, every new element comes, will go its top, right, bottom, left. So all will be covered. And just this boundary condition where I was getting a stack overflow error yesterday. So I added these conditions. These are pretty simple. It took me around half an hour off stream. I got confused too much on the stream, and it worked pretty well. That's what I'm happy about it. It is like 100%. So 0 millisecond time to chhod do. Time changes every time, but then 100% this clap symbol I never get. Shri Sai, you deleted something, yeah. Never delete your messages, please. I can go, you don't, I can go back in time and I can see your message, what it was. Same formula for number of islands. Yeah, same formula for number. That's why I यहाँ पे here they suggested island perimeter, but island perimeter I thought is a different problem. Number of islands is almost same. So I'm trying to build this. The thing, yesterday I was faced the situation similar to the interview. In interviews, I have faced that whenever there is some little bit of pressure, I tend to forget things sometimes, or sometimes I underperform. So that's what I felt yesterday, and a good learning point it was, how to perform, because the whole point is to be correct when there is an interview. So in this problem, similar to that, we can pass. Okay, so we have to start from here. So we need a for loop. We'll start from here. If it's 1, then we will do DFS. Okay, we'll check all the directions. Instead of calling that function DFS, we should call it like check all the directions. That's much better. Yeah. तुम भी तुमने ग्राफ्स में क्या क्या सॉल्व कर लिया अब तक शेसाई? What's the current status of yours? So we'll go on all the directions for this one. Then once the direction DFS runs, the second function will check if this is 1. We have to also mark it as visited, else we will again come back to the same point. So we need visited array. Uh, we need a visited array. So the DFS function is running now, and then it will go here, check 1, and once it checks, what we have to do, we have to do DFS on this point, like check all the directions. This direction is checked, this direction is checked, both are this. So our count of uh, island count will remain 1 only. So for this one, we'll check right, we'll check bottom, up is visited, so count is again 1. For this one, left is visited, so right will visit right, and then bottom is visited, so island is still 1. Then for this one, we'll check left is already visited, will not check again. We'll check right, and we'll check bottom. So there is 0, so there is only right left. So count is still 1, and for this one, we'll check right, left is already visited, and right is 0, so we'll not consider that, and bottom is 1, so we'll add to this visited. So for this, left is 0, right is 0, top is visited, bottom is 0, so this is the end. Then for this one, right left, so I guess it's a pretty number of islands, rotting oranges, flood fill, connected components, number of province. That's good, that's nice status. You are in very strong position, bro. How many questions you have solved by this time now? Maybe 300. Last time you were on 249.
if I remember correctly. You have 277 questions solved now. बाप रे बाप. भाई कितना दिन भर सॉल्व करते हो क्या तुम श्री साई? Man, 14 submissions on 6th of June, bro. 277, bro. I can see your profile. You're crazy, bro. Six submission. What, you are applying for ISRO or NASA or something, bro? Nine submissions, seven. Baap re baap. 14 submission is crazy, bro. For 6th of June. 6th is today, no? So today you did 14 problems. Crazy, bro. Crazy. Morning 6:30 to 10 and 5:30 to 9, bro. You have crazy ass discipline. I woke up at 10, bro. Once you once you did till the time you did 10 questions, I was sleeping. This is nice. Good job, brother. तुमने हार्ड कितने किए? हार्ड क्वेश्चंस 13 हार्ड क्वेश्चंस, मीडियम 117. इट्स अ गुड रेशियो. 100 days batch, 50 days batch. Yeah, rotting oranges. I can see here left and right some difference, range, some flood field, number of you did number of islands, sum of integers, number of provinces. Have you given any? No wrong, no wrong answers. Okay, wrong answers also count. अब मेरे को डाउट आने लग गया खुद पे. So maybe I need a for loop to run each and every element, and that element will be that. So let me take this. What's your strategy, bro? Sri Sai, what's your current strategy that you are following? So in this one, maybe we do for int I equal to 0, I less than, so we need int rows is equal to grid dot length, and int columns is equal to grid 0 dot length. uh no, wrong answer. Hello, I'm back. Why will you thanking me? Why will you thanking me? Are you said no nice thumbnail, so that's why I said thanks. For what? Reading, searching jobs? Yeah, both searching jobs. uh, first and foremost is searching jobs. How your क्या बोलते हैं उसको, job hunting journey is going on? Did you get any calls? Less than roads and I plus plus. Okay, in this one, for int j equal to 0, j less than columns and j plus plus, and in this one we'll do DFS. So we still don't know what will all the things DFS will have, so we'll keep this as a gray area that we have to figure out. And
what it will give to us, this DFS should give us uh, count. So int count equal to 0. So count equal to this, and at the end return count. Okay, this is 0 equal to 0. This is equal to 0. Okay, and then for sure it's public int DFS. The first thing we'll need is grid. So char grid we surely need. Uh, Trying in different portals, cold emails, asking referrals, no calls. Oh, अभी चालू होगा bro, because it's a new quarter will start have started now. January, February, March, April, May, June. So the quarter is about to end. So the companies will start hiring again. So you will get some calls now. Are you getting any profile activities on Naukri.com? Like it shows you impressions, how many impressions you got. So once I start job hunting, I get almost around 9,000, 10,000, and I have seen some other people getting 17, 25,000 of uh, impressions on the Naukri profile. So it should be high. If not, then you have to optimize your profile as well. Say some portals यार, जो मेन पोर्टल वही है यार, नौकरी और लिंक्डइन, इससे ही सब काम होता है. बाकी सब पे आई डोंट नो व्हाट्स द हिट रेशो इज देयर. मैंने कभी खुद से जॉब मतलब ऐसे ढूंढा नहीं है. आई हैव ऑलवेज गॉट कैंपस प्लेसमेंट. So I got two jobs and both of them through campus placement. I switched only one job and उसका मेरे को LinkedIn से आया था. So I updated my LinkedIn profile and HR recruiter texted me on LinkedIn. So hey, are you interested in this? I said yes, and then I gave aptitude exam and interview, and then it's done. Even though I was trying through Naukri, I was getting some calls, but it was mostly for .NET because my profile had .NET mentioned, but I wasn't good at .NET that much. I've used .NET little bit. My main technology was this, so Naukri is best, bro. Naukri and LinkedIn are the best. There is one strategy you have to like apply daily, and please do mention that you are an immediate joiner in your Naukri profile. Then you will get lot many क्या बोलते हैं उसको, कॉल्स. एंड डेली का भाई, डेली 10 जॉब 20 जॉब्स को तो मिनिमम अप्लाई करना ही करना है बैठ के. एंड देर इज़ वन एक्सटेंशन फॉर लिंक्डइन. मतलब इट्स जस्ट कीप योर प्रोफाइल एक्टिव एंड इट अप्लाइज द इजी अप्लाई जॉब. देर इज़ वन प्रोफाइल क्रोम extension that I used to use, this notch up auto apply. So this in this one, if you go to LinkedIn jobs section and then start this auto applier, it will apply like hundreds of jobs for you. Say some portals यार, इस जॉब हंटिंग थोड़ा मुश्किल ही काम है मतलब ना, और वो भी पहला जॉब. ट्राइंग यार, ट्राई ब्रो. विल सेलिब्रेट वंस यू गेट द जॉब. विल हैव अ गुड सेलिब्रेशन. मेरे को मेरा हैंड राइटिंग ही अच्छा नहीं लग रहा एक्चुअली. DFS ठीक है. In this DFS what we will do, what the first things we have to check, if it's 0 then simply return, but we can't return because it's an int return type. So if it's 1 then continue. Okay, I'm thinking in simple terms now. If grid row column is equal to 1,
then again call this function recursively. So we'll for sure will need int row and int column, and one more thing that we forgot, that we need an visited array. So we need boolean visited array. So it will be new boolean size, so it doesn't matter. Party, yeah. Yes, bro. I'll give you party, don't worry. You have such a strong profile. I'm not sure what's going wrong right now. What the fuck is this handwriting, brother? Will you be okay to come to Pune, bro? श्री साई. हाँ हो गया भाई, अभी मैं स्ट्रीम के पहले वही दिखा रहा था, सो मतलब स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रीम. यस भाई, तुम लोगों ने दो दो लॉजिक घुसा के मुश्किल कर दिया. आई वॉज सो क्लोज, यू नो, विद द फॉर लूप वाला, बट देन आई डिस्कार्डेड द फॉर लूप वाला बिकॉज इस ये बनता गया, इससे हो गया. ये रो प्लस माइनस करना था, यहीं पे मैं गड़बड़ कर रहा था. एंड देन इंस्टेड ऑफ डूइंग लूप्स, आई थॉट व्हाई नॉट द वन थिंग दैट आई हैज थॉट इनिशियली, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, मतलब -1 0 जो भी करके ये पास इट टू द DFS एंड इट विल डू all the things recursively. Currently in Bangalore, yeah, that I know. Are you like willing to migrate? कल वाला हो गया, सी इट वर्कड ब्रो. मैंने पोस्ट भी डाला था इसका. तुम लोगों ने बहुत कंफ्यूज कर दिया मेरे को, बहुत ज़्यादा. भाई पर मैंने सही कहा था, DFS का एक ही कॉल था फंक्शन में, रिकर्सिव कॉल था. हाँ शायद तुम लोग, यार देखो, तुम लोगों ने जिन्होंने भी किया है ना क्वेश्चन, तुम लोगों को पता था कि क्या सॉल्यूशन है, बट मेरे को नहीं पता था ना. जो तुम लोग बोल रहे थे शायद मैं वो कैच नहीं कर पा रहा था. आई ट्राइड टू कैच अप विथ व्हाट यू गाइस सेड बट इट डिडंट वर्क. मेरी बत्ती नहीं जली दिमाग की. इट्स नॉट ऑन यू, इट्स ऑन मी. You guys tried to help, which is nice. Okay, visited. So see, even though I fail it, it's okay. But I have to like do all the dry runs and all, and try to figure out what's the best solution is. At the end, I can take help if I spend more than 2 hours on any problem. At the end, I can ask ChatGPT, tell me if even if I'm close or not. If I'm close, then tell me the first mistake that I have to correct. Yep, it's similar. See my flood fill in BFS. ओके तुम्हारा देखे क्या. तुम्हारा प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है भाई. श्री साई, तुम जावा पे ही जॉब करना चाहते हो या एनी अदर टेक्नोलॉजी इज फाइन? बिकॉज तुम्हारा, अच्छा डायरेक्टरी तो ये दे रहा था यार, मतलब हाँ DR और DC तुमने दो अलग इसमें लिए. क्यू यूज किया है क्या? क्यू न्यू लिंक लिस्ट, क्यू ऑफर न्यू इंट, ओके इनिशियल कलर, ओके. ये मैं ये किताब पढ़ रहा था, इसमें भी यही ऐसे लॉजिक है. दिस fundamentals of C++, it looks like more of a C++ का logic because you have used queues and all, which is nice. Okay, यहाँ पे you have used rows, double for loop. Okay, flood fill नीचे है, then BFS. अच्छा, you use BFS over here. uh, you can look up my LinkedIn, bro. I have shared few days ago my LinkedIn profile. You can check my profile
on LinkedIn because I'm not supposed to say the company names and all at this point. JavaScript, TypeScript, DevOps. जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट डेवऑप्स जावास्क्रिप्ट में क्या जॉब करोगे जावास्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ तो करते होंगे रिएक्ट एंगुलर या नोड जेएस आपसे इंस्पिरेशन आता है कुछ करने का थैंक्स भाई रिस्पेक्ट अरे यार नाइस यार थैंक्स ब्रो ऐसे कमेंट देख के लिटरली अच्छा लगता है पता है यहाँ कुछ आता हो ना हो लेकिन ये कमेंट देख के अच्छा लगा मेरे को कंपनी का नाम राघव you will have to look up on my LinkedIn profile. It's the same. Rohit Munde is my username. You can search. Uh, React, Node.js, Next.js. No, it was that tech stack was in my previous company, but मैं तुम्हें भेजता हूँ मैंने एक ट्राई किया था लेकिन मेरे को कुछ रिस्पांस नहीं मिला वेर इज द डिस्कॉर्ड मैंने एक जॉब पोस्टिंग डाला हुआ था उस पे see, I was part of my TPO of college, so I still get the emails of the job opening, especially for the freshers. But the problem is that all the job openings are listed on my college homepage, and for that you need college ka email ID. That will not work. But for the same company, same thing, hiring like they are calling for interviews at some place, then it would be open for all. So I have found these separate links and I posted it. कहाँ गया डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड पे मैंने ये डाला हुआ था इसका मैंने इंटरनशाला का यूआरएल ढूंढा लेकिन दिस केम टू लाइक फॉर फ्रेशर्स हैव एवरीवन yum ple.ai is hiring for software developers interns full stack so there is a walk-in drive it was on 5th June so nobody responded I thought no one cares about the jobs here hmm, मेरे कॉलेज का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है लेकिन जॉब्स के लिए ना आई रिमेम्बर देयर वाज अ गाय जिसके पास लिटरली इट्स नॉट अ जोक इतना मार्कशीट का बंच वो लेके गया इंटरव्यू में प्लेस्ड इट इन फ्रंट ऑफ लाइक इंटरव्यूअर एंड देन स्टिल ही गॉट प्लेस्ड आई डोंट हैव डिस्कॉर्ड यू कैन टेक्स्ट मी ऑन लिंक्डइन ब्रो direct message I know you guys by name so it will be easy for me but my whole network is in Mumbai and Pune I don't have any network in Bangalore okay yeah sorry buddy कहाँ थे हम विजिटेड हमने बना लिया और विजिटेड भी पास करना है अपने को डीएफएस में सो विल गेट दिस कॉलम एंड देन boolean visited okay and then if equal to this first we'll mark this as visited so how we will mark that as visited that particular position for that maybe do we need I guess we need an int array over here so we need an integer array so we'll have int 2d array visited okay equal to this and instead of this we'll have
int 2D array, and in this one, if it's this, then in the position of the same uh, visited row and column is equal to, we'll mark 1 instead of boolean, and then we'll do DFS on it, so it should go in all direction. Followed in LinkedIn, let me check. There is one more friend with whom I talk. His name is also Sri Sai, I guess. Its name is Sai Teja. Mm, did you text me ever, bro? Because I don't see you. It's fine. Whenever you need, you can ping me. भाई सीरीज रोज होगी ना, आपके साथ ही क्वेश्चंस ट्राई करते हुए कॉन्फिडेंस मिलता है, एंड हो भी गया कुछ क्वेश्चंस तो अरे बढ़िया यार. दिस इज व्हाट द होल पॉइंट इज. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड द वर्ड. So join with me and try the questions along with me. Help me because I'm noob in all these things. So we'll learn together. That's the whole point, bro. Yeah, I'm doing regularly, bro. कभी कभी बहुत ही एक्सट्रीमली काम आ जाता है तो I'll ping on Discord कि it won't be possible. But for June I have dedicated this time to the channel. So for June at least I'll ping. I'll stream every day. I have to start one more Spring Boot project as well that I really liked, and I also got the good response on the stream. So we'll do a mix of both. So right now I'm focused on LeetCode, but after some time, maybe after Graph is done somewhat 30-40%, I'll start one project. Just followed. Okay, fine, fine. Ping me unless because I can't, I won't be able to find you. I didn't see any notification as well because it doesn't show you someone followed you or something. HR, what was your previous monthly salary? I'm not interested in your job, bro. For Rago, if you are searching for my LinkedIn, here is my LinkedIn. If in case I'm doing a project with Kafka real-time banking transaction system. Oh, that's nice, yeah. That's good. भाई तुम you are a real good candidate for like you remember that day I I forgot Jagdisham, he shared his Amazon experience, how he got into Amazon interviews and all, and he cleared 3 rounds, and unfortunately fourth round he couldn't clear. So you have similar energy, bro, Sri Sai. I'm seeing you. You will be placed in some good product-based company, well-known product-based company in Bangalore, easily. It's just a point in time that you get your first call. You're a good candidate. Companies are missing on you, not you are missing on. What the fuck, bro? चल नहीं रहा मेरा पेन. मैं जो पहली फ्रस्ट्रेशन है जिंदगी में, और ऐसी छोटी छोटी चीजें इतना फ्रस्ट्रेशन देती है कि बस. ओके, विजिटेड हमने मार्क कर दिया, एंड अगेन विल डू डीएफएस कि भाई गो एंड डू द ब्लडी हेल जर्नी अगेन. ओके, बट बट व्हाट but what mm, so maybe this for loop is not the we need here. Maybe this for loop we need in here in DFS function. Thank you. Yeah.
I guess this for loop is not required over here. This for loop is required over here, and DFS will call on each and every element. So probably we'll use this for loop over here. How can I copy paste this code of block? There's no way, I have to write it again. So not this. From here we will send DFS grid, will send 0, 0 and then visited ka array pass by reference. This much will send, and in this one uh, that is this, then for loop इसके बाहर लगेगा अंदर लगेगा for loop. So इसके बाहर लगेगा for loop. Okay, so we'll write for int I and we'll use shorthand int j. Okay, in this one we'll do I and j. So this grid, this uh, I comma j and visited. Okay, maybe it will reach to each and every point, but then we have to again think about the count. So how the fuck we will think about the count? उसके बारे में तो सोचा ही नहीं, iterate किए जा रहे बस. If that happens, we party in Pune for sure, bro. For sure. काउंट कैसे उसमें आएगा? Maybe in the else count plus plus. Isn't it supposed to be exactly same to the flood field? What the fuck are we doing here? So count and then at the end return count. We'll close this bracket. Let's try. The prince, we got the prince in the chat, bro. कौन सा कोर्स है भाई? इंटर कोर्स है भाई. बहुत कम लोग कर पाते हैं ये कोर्स. So from where we have started, same, but you need to see individual components too. भाई समझने वाली लैंग्वेज में बताओ यार. इंडिविजुअल कंपोनेंट्स टू, but you need to see individual components too. Let's write whatever I have written over here. So ये तो था ही उसमें. So this logic was there. Intros is equal to grid dot length, and then int columns is equal to grid 0 length. Okay, then what we did, we just int count equal to 0 and अरे भैंचोद कीबोर्ड को क्या हो गया अबे 0. Every starting point is a separate island. Every starting point is a separate island. Yeah, that I have to consider. First I'll write whatever I have like this. So int count equal to DFS, and in this one
ग्रिड। भाई ये इजी है, सिंपल फॉर लूप लगाओ एंड चेक इफ दिस सेल इज नॉट विज। भाई अभी मेरे को मत बताओ, पहले एक बार मेरे को ट्राई कर लो, अगर मैंने हगना चालू कर दिया देन आई विल सी योर सॉल्यूशंस। पोस्ट करो सॉल्यूशन बट आई विल रीड वंस आई गिव अ गुड फर्स्ट ट्राई। रो, column and then visited. So int, तुमने ऐसे बोल के और मेरे को प्रेशर दे दिया कि भाई ये इजी है। अब तो नहीं होने वाला मेरे से। नहीं हो जाएगा। न्यू इंट एरे। देन पब्लिक int dfs, in this one char grid comma int row int column and comma int visited. This one we need these two for loops. So int I equal to 0, I less than, ये भी अपने को इधर चाहिए, ये ऊपर नहीं चाहिए। क्यों ये मार्च सुधार है अपना। 0 कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, LENGTH, दैट इज करेक्ट। rows -1, 3 less than 3, that is correct, and I plus plus inside this int j equal to 0, j less than columns and j plus plus, and then inside this we'll do uh, if grid row, not row, I j equal to 1, then inside this mark this same visited I and j as 1, and then do DFS again with all these same things. Do this DFS, do DFS, and here 0 will be changed with I and j, and then else count plus plus, maybe this is wrong, and at the end return count. मेरे को इसको साइज देने की ज़रूरत नहीं है।
क्या हुआ है सिंटेक्स, बेसिक सा सिंटेक्स। रोज एंड कॉलम्स तो वी नीड हियर, सो इसको हम शायद इसको बैड operand फॉर टाइप्स। भाई सॉल्व कर दिया। नहीं भाई, जस्ट रो एंड कॉलम नॉट रो -1, ओके। यहाँ पे क्यों ये बोल रहा है बैड ऑपरेंट, इट्स अ कैर एंड इट्स अ स्ट्रिंग, सो इसको कैर कैसे दूँ मैं अभी। इट्स एन इंट, इट्स अ कैर आई गेस। काउंट हमने दिया ही नहीं है इसको, तो काउंट भी देते हैं इसको, विजिटेड कॉमा काउंट, सो कॉमा इंट काउंट, ओके। काउंट, सॉरी, काउंट स्टैक ओवरफ्लो, हाँ। हम्म, मैं देखता हूँ, एक सेकंड में पहले ट्राई कर लूँ। हाँ राघव, मैंने वो फिक्स कर लिया। नाउ देयर इज अ स्टैक ओवरफ्लो बिकॉज रनिंग लूप 0 1 2 3, is it -1 here? No, but mm, क्यों स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है? स्टैक ओवरफ्लो सॉल्यूशन DFS, I and J are well within the range if I'm not wrong. मेरे को कोई मैसेज नहीं आया राघव, आई डोंट सी एनी मैसेजेस। किसको भेजा तुमने? See this, I don't have your message. If you can see my screen. Show the DFS function दिखाना। लिंक्डइन पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजा है। अरे मेरा लिंक्डइन ओपन ही है, फॉलो रिक्वेस्ट का फॉलो रिक्वेस्ट भी नहीं आया कुछ। नो पेंडिंग इनविटेशंस, नथिंग। किसी और को भेजा है तुमने फिर? आई डोंट रिसीव एनी, सी मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं आया तुम्हारा, सी देयर इज नथिंग। व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग ओवर हियर,
int I 0 I less than rows I plus plus, then this mm, columns, and then grid I. आपका ईमेल आईडी बोल रहा है टू कनेक्ट विथ यू। अरे ये लिंक्डइन पे तुम फॉलो और मैसेज करने के लिए कोई तुम्हें ये नहीं चाहिए ना। टू वेरीफाई दिस मेंबर नोज यू प्लीज एंटर देयर ईमेल टू कनेक्ट, यू कैन आल्सो इंक्लूड अ पर्सनल नोट, लर्न वाई। एंटर देयर ईमेल, मेरा ईमेल नहीं होगा भाई, तुम्हारा ईमेल होगा, पूछ रहा होगा वो। लेट मी चेंज माई सेटिंग इफ देर इज, बट इट्स अ पब्लिक अकाउंट, मैंने इसको कुछ ये नहीं किया है। यहाँ पे बताओ मेरे को क्या मिस्टेक हो रहा है मेरे को यहाँ पे, दिस फॉर लूप। Settings and privacy for LinkedIn, name, location, verifications, save work email to autofill, identify workplace, back, visibility, minimum viewing for page visibility on public profile setting. I can see your message now. Yeah. तुमने वेक्टर वेक्टर बहुत कुछ यूज किया हुआ है। Today 11:07. Raghu, you works in Flipkart, bro. Raghu, macha, you work in Flipkart. Oh shit, bro. I message. Yeah, I saw your message. I got your request, Raghu. I'm seeing your profile, brother. You work in LinkedIn. Sorry, you work in Flipkart. This is you, right? What the fuck, bro? You are from Ludhiana, Punjab. Mm, software developer, iRoots, Dr. B.R. Ambedkar, National Institute, Jalandhar, 2125. So tell us, bro, how you got into Flipkart? Spring Boot, Apache, Spark Streaming, internship. Acha, you did internship, you got an internship, and then you joined Flipkart. Bloody hell, bro, what are you doing here on this stream? राघव सप्रा। यार तुमने मेरे को कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन भेजा हुआ है, जो मैं कर रहा हूँ उसका एक्सटेंशन भेजते तो मेरे को आसान होता। uh, yeah, I got your message.
दी वॉक इन ड्राइव TCS। तो तुम्हें अभी कहाँ जाना है राखो, इससे ऊपर सही जगह तो हो। और यार ये फिर से थोड़ा अलग सॉल्यूशन है। यू आर नॉट चेकिंग डायरेक्शंस, नॉट ट्रैकिंग यू। अच्छा, इसने मेरे को बताया फुल कोड स्क्रीन पे दिखाओ, आई विल हेल्प यू डिबग। अरे नहीं, मेरे को वो नहीं करना है राघव भाई, आई नो यू नो दिस थिंग्स। सी, I know that you know all these things. You are not checking directions, not tracking visited, not increasing count. You can't give count like that. Java is pass by reference. Although it's a pass, it's in reference only. It's a reference only, bro. यहाँ पे भी अपने को वो 4 DFS करने पड़ेंगे क्या? अप डाउन राइट लेफ्ट, बट हम तो सारे ही ये कर रहे हैं यहाँ पे, तो सारे का ही हमें चेक करना होगा क्या? ये सबसे पहला जो है, दिस वी डोंट नीड, एंड विजिटेड हमने चेक ही नहीं किया। विजिटेड आई जे इज नॉट विजिटेड आई गेस, so is not equal to 1, then only do this count whenever we find it. Hmm, what you are saying, bro? DFS function is looping through that fine, but it's calling itself again with 0 0. That's my stack. That's why stack overflow DFS 0 0. अच्छा, इसलिए ओके। ओके ओके, समझा। अब नहीं आएगा शायद, मैंने विजिटेड का ये मिस कर दिया था। एटलीस्ट स्टैक ओवरफ्लो तो ना आया। हाँ ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो तो एरर गया। इट वर्कड फॉर वन केस, it failed somewhere, so let's see how many test cases it's passing. 25, oh it's okay. क्या फेल हो रहा है अपना? दिस कंडीशन। If you check like that, it will check whole grid in one time. There should be a breakpoint. Can I paste this on link? Sorry, Discord. You are passing. If you check like that, it will check whole grid in one time. There should be breakpoint. Hmm. Acha, it's scanning the whole grid, that you are saying this. Okay, so where should be this then, ideally?
अच्छा, तो पहले का ही हमने यहाँ लिखा था, दैट इज करेक्ट नो? दिस फॉर लूप शुड बी इन दी ऊपर वाला फंक्शन, नॉट हियर. So let me get this here. Okay, and how will I pass this? यहाँ पे नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. यहाँ पे वही लॉजिक होना चाहिए जो हमने कल यूज़ किया था, रो कॉलम वाला, all the row and all. So maybe this we don't need here, and यहाँ पे uh, we need just I guess we need only here like this. Top, what was the top? Is like +1, -1, and it's a row. So row and this column. Okay, row +1, row -1, column will stay same, row column +1 and column -1, so that it will check up down below, right? ठीक है, ये काउंट का हम देखते हैं क्या करना है. एंड देन विजिटेड कहाँ चाहिए हमें? तो विजिटेड का इधर ही चाहिए. सो आई डोंट थिंक वी नीड टू पास visited over here, and we need to pass count over here. Okay, so count and visited are not needed, this not needed, this not needed, and this not needed. Okay, and then mm, this rows and all is not needed here also. Okay, तो DFS नहीं, हमने कुछ तो हक दिया. ये लॉजिक नीचे चाहिए मेरे ख्याल से. Chat saying anything? If you check like that, I did in BFSEO, you want check just slightly, you will get whole point. If you want check just slightly, मैं एक हिंट पूछ लेता हूँ. ये मेरे ख्याल से ये void ही चाहिए. ये अपने को कल वाला ही लॉजिक सही था और ये नहीं चाहिए. ठीक है, और ये यहाँ पे नहीं आएगा मेरे ख्याल से. ये काउंट रिटर्न नहीं करेगा, बट यहाँ पे वो लॉजिक चाहिए अपने को ना, जो चेक करने वाला लॉजिक है. इफ ग्रीड, okay, maybe this logic we need here. If grid I, not I, row or column is this, and same row and column is not equal to 1, then visited row and column mark this to 1, count plus plus. ये लॉजिक यहाँ पे नहीं चाहिए. मे बी काउंट प्लस प्लस यहाँ पे भी नहीं चाहिए. तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को? ये शायद नहीं चाहिए. काउंट कहाँ हम इंक्रीज करें फिर? काउंट पास करना है या नहीं करना है? व्हाट यू गाइज आर सेइंग? चेक माय सॉल्यूशन.
So apparently we need visited. So ये हमने यूज कर लिया है तो इसको पास कर देते हैं visited is being passed count not pass we pass only visited into visited. Maybe that. I guess we need to have this logic over here as well. So if is one and is not visited, then do same thing. And यहाँ पे जो हम पहले कर रहे थे वही करेंगे count प्लस प्लस. ओके क्योंकि count प्लस प्लस होने का तरीका चाहिए कहीं ना कहीं. Then at the end return count and then if visited यहाँ पे I guess and maybe we need to return from here. Okay, like this. Cannot find symbol. Grid row, grid column. This is I, sorry, I, and this is J. This is I, this is J. So, okay, now our method type is different. Let's fix that. DFS we are passing grid I, J, and visited. I removed visited from here. So visited. Let's copy all this. Visited, 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 and then this visited. Okay. Okay, at least it worked. I guess we don't need this return. I guess we need all those conditions as well जो हमने कल वाले इसमें रखी थी. So if row is less than 0 or column is less than 0 और क्या कंडीशन था फ्लड फिल में अपना. ये नहीं है ना अपना नंबर ऑफ कॉलम्स और ये कंडीशन नहीं है इसमें. तो इन दैट केस रिटर्न डायरेक्टली. ओके. Index 4 out of bounds. Okay. And or row is greater than
grid dot length. It is rows and columns is used here. Okay, this is used here. Or uh, column is greater than grid 0 dot length. Okay, still out of bound. Number of rows. Yeah, this is or greater than. Okay, or it's an or condition. Or mm, stack overflow again. So what other condition we had? Is this now अब क्या हो रहा है? Maybe we are anything is chat saying. Yeah, chat is saying so many things. I did this and we want check solution. चेक करते हैं 11th लाइन में काउंट प्लस प्लस 11th लाइन. हाँ काउंट प्लस प्लस क्या 11th लाइन काउंट हाँ किया तो है. मोटिवेटर brother, how was your first video or live stream? How days were gone when the video stream was about to start past before it? नहीं समझा मैं क्या. Brother, how was your first video or live stream? How days were gone when the video or stream was about to start past before it? Yeah. Yeah, it was good the first video if you are asking stream. People are say, Arey Raghu, you deleted something. I was about, don't delete it because base condition missing. Abhi you are rows grid. क्यों डिलीट कर रहे हो भाई? कॉलम ग्रिड 0 डॉट. अबे यार राघव, व्हाट द फक भाई, डिलीट क्यों किया राघव? मैं पढ़ रहा था. हमने जीरो का कुछ चेक नहीं किया है मेरे ख्याल से. अगर जीरो है तब भी रिटर्न करना है क्या? ठीक है, मे बी हमने ज़ीरो का कंसिडर नहीं किया तो इफ दिस इज ज़ीरो तो अपने को कुछ करना नहीं है आगे, तब भी रिटर्न. और ऑलरेडी विजिटेड है तब भी हम, क्योंकि मैंने ये कंडीशन शुरुआत में ही सोचा था बट इट वाज ऑफ रिटर्न टाइप इंट, सो आई कुडंट. सो इज इक्वल टू 1 then return. So we don't need this condition over here I guess. Hmm. ए स्कीम आ गया. राघव ने क्यों डिलीट किया भाई? राघव तुमने क्यों डिलीट किया मैसेज? नाउ आई वांट टू नो व्हाई यू डिलीटेड द मैसेजेस. Where I need to take some hint now. Let me charge my laptop. राघव को शायद गुस्सा आ गया कि मैंने नहीं पढ़ा. यार मैं वो इसमें बिजी, इधर मेरा ध्यान ही नहीं गया था.
कुछ तो आई प्लस प्लस ये लिखा था और मैं पढ़ रहा था, यू हैव डिलीटेड दोज। ओ इट वर्कड, ये मिस्टेक था क्या? ओ इट वर्कड, नाइस। तो ये हमने जो पहले किया था यही सही था, फॉर लूप यहाँ पे ही देना था, ये काउंट यहाँ नहीं चाहिए था, बट दिस वाज करेक्ट। ये नहीं करेक्ट था। तो मतलब बस फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट फंक्शन का काम ये है कि तुम डीएफएस में भेजो, डीएफएस वो डायरेक्शन, तो इसको हम नाम देना चाहिए रन इन ऑल डायरेक्शन समथिंग। इसका सही नाम है चेक ऑल डायरेक्शंस, दिस इज इसका सही नाम, चेक ऑल डायरेक्शंस। यहाँ से काम करो और उसको भेजो। डीएफएस वीएफएस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी। ओ इट वर्कड। Let's compare what Raghav gave to us. Private void DFS vector. void DFS इंट जे, ये मैं कैसे समझूंगा ये किस चीज़ का क्या है? इफ़ आई, हाँ एट द एंड मैंने यही किया है, इफ़ विजिटेड ज़ीरो, तुमने ये सब कंडीशन एक कर दिया है, तो मैं भी कर सकता हूँ उसको। अच्छा एंड में तुमने विजिटेड वन मार्क किया है, लेट्स सी। सी हमने क्या किया है, इफ़, यहाँ पे ये इफ़ की कंडीशन नहीं है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर कोड राघव। और तुमने इसको भी एक ही इसमें कर दिया है। आई विल कीप इट डिफरेंटली बिकॉज इट्स रीड मोर रीडेबल। ठीक है, और क्या था तुम्हारे कोड में? विजिटेड दिस आई प्लस वन, ये किया है, ठीक है, ये तुमने बताया। Then int number of islands, m a size 0, int n count 0, vector this. Uh, okay. Mm, this I need here. How much
you took to solve the first 50 DSA problems when you started? Uh, I don't remember. I guess. Let me check on my streams. Mm, so the video I posted was on 10th May. So so maybe 40 days or 38 on the 39th day I completed 50 questions I guess, or maybe 48 days. Around 40 days you can consider roughly. Yeah, thanks buddy. यहाँ पे क्यों खाली है? Yeah, it worked. राघव ने भाई डिलीट कर दिए मैसेजेस लिटरली गुस्से में. गुड. डेली वन और टू प्रॉब्लम्स दैट मच ओनली आई डिड ब्रो. अगर कोई इजी प्रॉब्लम होगा तो उस दिन दो या तीन. कभी कभी वो आई वाज सॉल्विंग हैश मैप्स मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, तो आज आई सॉल्व्ड 4-5 क्वेश्चंस इन अ डे, 6 क्वेश्चंस में भी इन अ डे. बट ये बड़े बड़े क्वेश्चंस तो आई सॉल्व ओनली वन और टू बिकॉज उतना टाइम नहीं मिल पाता मेरे को. मेरे को वीकेंड पे भी ऑफिस का काम करना है थोड़ा बचा हुआ. तो व्हाट्स द सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पे देता है ना सजेशन कि on the similar line what's the next problem, walls or gets. uh, Let me ask कि what's the similar problem that I can solve. mm, Max area of island. Max area of island, and it's a medium question. Can I solve this, Srisai, if you are still here? Is it on the same lines? Can I solve this question? हमको मालूम है इश्क मासूम है दिल से. It was really funny incident. Yep, you can. Okay, I'll solve this. I'll order something to eat first. Okay. mm, what can I eat? ब्रदर कैन यू टेल. भाई आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि क्या क्या बताना है. व्हाट डू आई हैव टू टेल?
mm, 150 क्यूब है, इसका प्राइस 180 है बस. It's texting on prawns chili. mm, कूपन क्यों नहीं अप्लाई हो रहा भाई? जस्ट अ मिनट गाइस, मैं जल्दी ऑर्डर कर देता हूँ. ओके, ही इज आस्किंग समथिंग. लेट मी रीड दिस. एक सेकेंड ना. व्हाट यू वर सेइंग? गाइस, तुम लोगों ने लाइक नहीं किया स्ट्रीम को आज. मैंने एक बार भी बोला नहीं है, तुम लोगों ने किया भी नहीं. यप यू कैन. ओके ब्रदर, कैन यू? भाई आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं. एक लड़का है, वो अभी जस्ट 12th पास हुआ है एंड ही have is focusing on DSA, C++, have started learning front end recently, already done HTML, Git commands, GitHub, and little deployment with DSA came near to arrays now, and he will start doing LeetCode also from tomorrow. Okay, and CSS is also going on till the end of June. Will count CSS after that JavaScript. He is documenting everything. What do you think? In which position is the guy? Average or little good? I'll say too good, bro. You are taking actions. Taking actions will place you like 100 place ahead. So you are not average or you are not little good. You are more than what you are thinking of you about you right now. You are in very good position, bro. Bar, if you have just passed 12, then and you have done these many things, you are in really good position. Yeah, Gautam is also agreeing with me. Gaut Gautama. Okay, let's read this question. Reading कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए था कि ये क्वेश्चन ऐसे मेरे दिमाग में अपने आप समझ में आ जाए, तो मेरे को इतना पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. You are given this matrix in 20 days, bro. Fuck. You are in too good position, bro. Stop doubting yourself. If you are doing that just like me, then please stop. Uh, अरे ये आज पॉज ही है क्या? You are given this matrix grid. An island is a group of ones representing land connected four directionally, horizontal, vertical. You may assume that all four edges of the grid are surrounded by water. Okay. The area of an island is the number of cells with the value 1 in the what? The area of island is the number of cells with value 1 in the island. Return the maximum area of island. Grid 1 in grid. If there is no island, return 0. क्या?
गाइस प्लीज लाइक कर दो यार स्ट्रीम को, मेरे को इतने कम लाइक्स देख के अच्छा नहीं लग रहा. हाउ मेनी व्यूज डिड आई गेट? इज पीपल एंजॉयिंग और नॉट? ओके, आई कैन सी इट. या, हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां. इन 20 days यू आर इन गुड शेप. तुम्हारा नाम बता दो, मोटिवेटर दी डिवाइन, मोटिवेटर दी डिवाइन्स, so that I can connect with you very well. Okay, this is the grid given. This is a fucking random grid or too big of a grid. The answer is 11 because the island must be connected for directionally. So output, the answer is not 11. Output 6. एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन. You are given this binary matrix, okay, grid. An island is a group of ones representing land connected four directionally, horizontal or vertical. You may assume all four edges of a grid are surrounded by water. The area of an island is the number of cells with value 1 in the island. The area of an island is the number of. अच्छा अच्छा, ठीक है. So 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have to find number of islands. Then what's the point of this? Okay. Is it the same then? Is it the same? Can I just copy paste the code? Let's try. Let's try, no? Try करने में क्या जाता है? Let's try. ठीक है, ग्रिड यहाँ पे int का है, तो this will be 1, this will be 1, this will be 0, this will be 0. Okay, this is int का grid, int grid. Okay. It worked, भाई. Exact same code worked. Oh, it didn't work completely. कुछ तो ये है. How many conditions though it passed? It's 102, 100. Oh, there are 728 test cases. Fuck. क्या स्माइली ये नहीं दिख रहा मेरे को, शायद मोबाइल पे दिखेगा. क्या है? आई गेस यू हैव आईफोन. या. You passed 0 and 1. You passed 0 and 1. कहाँ? चक दे पट्टे, ये दुनिया खेल तमाशा, तेरी ऊंची नीची भाषा. You passed 0 and 1. Track max area you covered. हाँ, ये क्वेश्चन ही डिफरेंट है. मैंने तो कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है. Return the maximum area of the island in the grid if there is. So,
Area is nothing but the number of islands, no? 9 and 1 means that output. Uh, Track max area you covered. So इसने output 6 दिया है, तो it's not counting these ones. It's counting the area or the islands. The area of an island is the number of cells with value 1 in the island. So the area is nothing but this ones. This is area, this is area, this is area, this is area, this is area. So maximum area of an island is not the count of ones, is count of these islands. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 and 1 means that output. 9 and 1 means that output. Max area you connected. Okay. Max area connected. एक सेकंड मेरे को थोड़ा सा सोचने दो. अच्छा अच्छा, मैंने ये कोड का ही ये कर दिया ना. मैक्स एरिया ऑफ आइलैंड. मैंने शायद कोड ही गलत उठाया था क्या. नीची भाषा चक दे पट्टे. नहीं, वो मैंने शायद नहीं चेंज किया था, वो वैसे ही रखा था. अरे मैंने कहीं और से उठाया. What are you seeing, bro? Max area you connected. मेरे को एरिया का कंसेप्ट नहीं समझा यहाँ पे क्या है. You are given this matrix an island of ones representing land connected four directionally horizontal. You may assume all four edges of the grid are surrounded by water. The area of an island is the number of cells with value 1. The area of an island is the number of cells. Acha, area is area of an island is the number of cells with value 1. So area of this island is 1, area of this island is 4, area of this island is 5, this 4, and this is 7, and this is 5. So we have to return the max area. So it is 6. Sorry, it is 6. Sorry, not 7. This is 6.
Okay, okay. So this should return us the int value in this case, and बट ये रिटर्न स्टेटमेंट्स कैसे काम करेंगे फिर? तो शायद इसको हमें इंट ही चाहिए होगा, एंड यहाँ से अपने को लेना होगा इंट, ये काउंट नहीं चाहिए अभी, अपने को चाहिए एरिया, ठीक है, और मे बी मैक्स एरिया, एंड वी हैव टू रिटर्न दिस मैक्स एरिया, and we need to take this max area from this function somehow. um, max area plus plus ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो एरिया देगा और उसका मैक्स दोनों का, तो इसको इंट ही करते हैं, और ये इंट करने के बाद ये सब 0 0 चाहिए, 0, एंड दिस आल्सो 0, ठीक है, बट काउंट अपने को कैसे देना पड़ेगा? तो यहाँ पे विजिटेड जो हम कर रहे हैं, फ्लड फल फील्ड में हमने क्या किया था, यहाँ पे इमेज में डाला था, मे बी इन द सिमिलर वे, ओ माई ऑर्डर इज हियर, इन द सिमिलर वे मे बी इंट एरिया इक्वल टू 1, एरिया पास करना पड़ेगा क्या हमें? डू वी हैव टू पास द एरिया? इन सब से एरिया लेना पड़ेगा अपने को, तो मतलब जब भी मिल रहा है तो एक बस प्लस करना है अपने को, तो इंस्टेड ऑफ दिस we need to have like int variable int area though, and from this one we can have like area equal to this plus this shorthand assignment we can use over here. So wait, my order is here. Hello, हॅलो, दारावरती आहेत का खाली आहेत? वरती आहे ना. मी कॉलमध्ये आहे सर, मी हलूच नाही शकत, मी म्हणून ऑर्डर केले, कॉल चालू आहे माझा. हा, काय काय? हां, थर्ड फ्लोर, यस. So area should be, what area should we get? Int area 0 and add this area. So we'll return this area only. Mm, this is making no sense. Or is it making sense? Because जब भी we'll find one, uh, am I doing it right, guys? Max area you connected, number of cells you connected. Okay, just a second, मैं order लेके आया.
you guys for waiting. uh, Number of cells you connected. मैक्स एरिया प्लस प्लस, तो मेरे को यहाँ पे शायद मैथ डॉट मैक्स और इसमें से ये मैथ मैक्स और मैक्स एरिया, इन दोनों में से शायद एक लेना होगा. स्टिल सेम. Did anything changed over here? 136, it's the same fucking thing. So area is this. uh, क्या क्या है खाने में बाय द वे? यार मैंने मोमोज मंगाया यार. मोमोज है खाने में. कम जॉइन मी ब्रो. बहुत टाइम बाद मैं गंदा खाना खा रहा हूँ. गंदा मीन्स अनहेल्दी. बिकॉज ये वीक में मैंने फुल जोर लगाया जिम में, और आज का आई कैन हैव अ वन गुड डे. नहीं तो फ़ायदा क्या है जिम जाने का? कोक मैं बहुत ज़माने बाद पी रहा हूँ. ओह मैन, देयर इज नथिंग लाइक कोक, आइस्ड कोक. ओके यार, एरिया मैंने लिया, ठीक है. मैंने शायद क्वेश्चन गलत समझा है क्या? नहीं, एरिया का ही ये चाहिए ना, मैक्स एरिया. मतलब जो अपने को आइलैंड मिला उसका एरिया हम अपने को काउंट करना है. तो ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जाके एरिया प्लस कर देगा और ये एरिया रिटर्न कर देगा. यही है अपना चेक ऑल डायरेक्शन का, ठीक है. तो शुरुआत में मैंने एरिया ज़ीरो, ओ शायद मैंने एरिया, क्योंकि बिकॉज वी ऑलरेडी फाउंड वन, सो मे बी एरिया शुड बी वन ओवर हियर. ठीक है, बिकॉज वी विजिटेड वन एंड एरिया दिस, and then add area sub area and we send this area back to the function. ओके यहाँ पे ये एरिया दे रहा है अपने को, तो ये सही है. मैथ मैक्स ये मेरे को थोड़ा सा नहीं सही लग रहा है कि मैक्स एरिया प्लस प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव कंटिन्यूड ऑन द ओल्डर लॉजिक दैट हैड काउंट प्लस प्लस. वन टेस्ट केस फेल्ड. वन मोर टेस्ट केस फेल्ड. गौतमा. Macha, what do you order for the late night cravings usually, or what do you eat? Shri Sai, if you are here, can you tell me what's the mistake? Do max area plus your every DFS function, it works I think. Do max area plus your DFS. Okay, you are saying I should do this like this. इसकी ज़रूरत है क्या पर, ये वाली की मैक्स मैथ मैक्स की? अच्छा कर्ड. ओनली कर्ड ब्रो.
कर्ड इज गुड आइडिया। सॉरी, थोड़ा भूख लगा है मेरे को। मैंने पेरी 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 फ्राइज बोले थे और नॉर्मल मोमोज बोले थे, उसने क्या किया है, पेरी पेरी मोमोज पे डाल दिया और फ्राइज प्लेन भेज दिया। वाह। व्हाट एल्स यू सेड, मैक्स एरिया प्लस प्लस हटा दो। ओके, हाँ ये मेरे को लग ही रहा था कि मैंने लास्ट प्रॉब्लम से उठाया है। आ, लेकिन मैक्स एरिया हमने कुछ किया ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका क्या मैक्स लेगा वो। ओके, शायद ये नहीं चाहिए प्लस। ओ ओके, प्लस नहीं चाहिए था, सही है। ये प्लस नहीं था श्री साई। इन योर डीएफएस फंक्शन whenever it goes up left right down it will count, या प्लस भी हटा दो, इट शुड बी, हाँ यस यस, हटा दिया, इट वर्क। मैथ मैक्स ये मैंने यही कोड उठाया था और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस था, तो मैंने उसको लिया था, कोई पॉइंट नहीं था उसका। तो बिकॉज यहाँ पे हम एनीवेज इंट वन कर रहे हैं, बिकॉज वन इन। ओके, दैट वर्क, थैंक यू गाइस। थोड़ा सा मेरे को खाने दो यार, थोड़ा भूख लगा है मेरे को। आई एम थिंकिंग, मैंने सबमिट नहीं किया, मैं सबमिट करके देखता हूँ। अच्छा, इट वर्कड, नाइस। आई एम थिंकिंग दैट ऑन एवरी सेल यू आर गोइंग, ओके, आगे। इन योर डीएफएस फंक्शन whenever it goes up right or down it will count, या राघव भाई इज बैक, या राघव भाई को बुरा लग गया था शुरुआत में। सिमिलर प्रॉब्लम कौन सा था इसका, लेट मी आस्क। या राघव इज बैक। तुमने नहीं बताया व्हाट्स योर गो टू फूड गौतमा, नाइट क्रेविंग्स जब तुम्हें होती है, व्हेन यू हैव लाइक नाइट क्रेविंग्स, व्हाट डू यू ऑर्डर जनरली। ये दुनिया खेल तमाशा। Let me find out the new problem to solve. Similar, on the similar lines I need problem, because the B pattern सही होगा. There is something called number of enclaves, it seems. Number of enclaves. Hello Anirudh Gamer. The startup guy is back. Hello bro. What's the update? Let me know your night craving food meanwhile. श्री साई ने बोला जस्ट कर्ड। आई एम नॉट श्योर कर्ड से पेट कैसे भरता है।
ये प्रॉब्लम वैसे ही दिख रहा है. Hmm, you're given M cross N binary matrix grid where 0 represents. Hmm, by the way, Anirudh, अगर तुमने मिस किया था तो I have read your all the message that you sent, all the description, and I have replied you on there only. I feel you are really doing good work, like being from mechanical background and you are still trying to build this thing. That is good. The other thing that I would really suggest you that you are over engineering things, which is often seen south on that in the industries, that if you are over engineering anything, that means something is really wrong there. So you may try to avoid that. You may try to use the existing things. Yeah, over engineering is the key word for you. Everything else you are doing fantastic. Just one thing if you can avoid, because your goal is to build the first MVP and test with the real users. If you are not doing that, or maybe if building everything to the perfect level and then you'll test, maybe it might take you a year or so. But then your motivation will not be at the same level, how it is right now. So your goal should be quickly roll the MVP and then test. And after that you will get to know really like what's the worth, and how it can be useful, or what other features that you will need in that. Okay. Waffle, yeah. Waffle मेरे को भी अच्छा लगता है यार. It's something, it hits really different कि गरम और मीठा दोनों एक साथ मिल रहा है. It's nice. Waffle. Okay, binary grid where 0 represents a C cell. C cell means, and 1 represents land cell. Okay. A move consists of walking from one land cell to adjacent 4 directionally land cell, or walking off the boundary of the grid. Return the number of land cells in grid for which we cannot walk off the boundary of the grid in any of the moves. Return the number of land cells from grid for which we cannot walk off the boundary. Input this, output 3. There are 3 ones that are enclosed by zeros and one that is not enclosed because it's on the boundary. All ones are either on the boundary or can reach the boundary. क्या डिलीट किया अनिरुद्ध? ओके लिखा था तुमने, दैट आई रेड. ओके यू डिलीटेड, व्हाट्स द पॉइंट ऑन इन डिलीटेड दैट? By the way, thanks Raghav. Yeah, Raghav is back, I read that. ये नहीं समझा अपने को. मूव कंसिस्ट ऑफ वॉकिंग फ्रॉम वन लैंड सेल टू अनदर adjacent, okay, land cell, or walking off the boundary of the grid. Move consists of walking from one cell or walking off the boundary of the grid. Off the boundary. Return the number of cells in grid for which we cannot walk off the boundary. Okay. हम boundary के बाहर, the ones in which we are not, means it should be all enclosed by zeros and not the boundary. So 0 should be a neighbor. So in this one clearly there is a boundary and all the ones connected to this. Okay. Arya Singh is back. Hello Arya. दो क्वेश्चंस हो गए और तुम अभी आ रहे हो. Generally I end at this point, but tomorrow is Sunday.
Guys, please do like the stream, yaar. I thought you guys really wanted LeetCode, so hence I shifted back from Spring Boot to LeetCode solving. But then I didn't see a good response, so maybe I should stop streaming LeetCodes. Isn't it? Isn't it the case? आज हवन होगी 3 बजे तक लीड कोड क्रैश कर देंगे। काश मेरे को इतना आता होता यार। मतलब मेहनत करने के लिए मैं हमेशा रेडी होता हूँ, लेकिन मेहनत के साथ साथ दिमाग भी उतना काम करना चाहिए। आई एम सॉरी बट आई सॉ योर स्ट्रीम वाज डूइंग समथिंग सो थॉट लेट्स फिनिश दिस फर्स्ट एंड देन वुड। ओके, आई वाज डूइंग समथिंग। मैं आते समय ही चालू कर दिया था। मैं भी पता नहीं बीच में कुछ बकचोदी कर रहा हूँगा। डोंट नो, बट या, नाउ यू आर हियर। This is the third problem of the day. We solved two. No, fourth problem of the day, third problem of the stream. I solved one off stream. So we solved, what was the first? Yeah, this I solved this question, yesterday's question, जहाँ पे I was really stuck. So I solved this with a very good score in the morning. I posted about it as well. Then the next question I solved was uh, कहाँ गया? Number of islands. Yeah, this question I solved. This was the first question for the day for the stream. Uh, then this was the max area of island, which has the exactly same code, almost exactly same code, but with the change of area, max area. So this was the second, and yeah. Oh, good, damn, bhaiya, nice TP here. That what nice TP? Okay. यार मैं शायद तुम जेंजी लोगों का, मैं भी ऑलमोस्ट जेंजी हूँ, बट I still can't understand your things. Okay, so what we'll do, we'll just take this number of island ka as it is and paste it here. Number of islands. Okay, then there is a grid. We paste this and we'll think about it later कि क्या है. इसमें boundaries भी include करने हैं अपने को, so that's one more addition of the this. This is int. Okay, yeah. Uh, oh damn good bhaiya, nice. We'll grind just like this someday for sure. Yeah, yeah. Please join us. Nice to hear. बोला. Oh, okay, okay. Nice to nice TP को hear कैसे? Okay, typo. अच्छा, nice typo हो गया. Okay, okay. For now, I'm learning DSA topics. I mean to write to. Oh, okay. Typo. My bad. It's okay, bro. Please give a like to the stream, guys. I think you all of you have liked the stream. पता है मेरे को ये कभी कभी मैं बड़ा हुआ हूँ ना, like see I'm from a purely typical government Marathi medium school. Like हमारा फीस भी 200 रुपये हुआ करता था. So I'm from such kind of a school. uh, the English song I never know कि such kind of things existed. So when I started
when I moved to Mumbai for my graduation, then I saw like there are some people listening to English and all this kind of music. And in the companies also right now also now the complete type of music that people hear in the clubs has been changed. So मैंने जो इसका Google Pixel का feature है Shazam kind of thing. So I have kept that open whenever I unlock my phone. I whenever I am at such party and there is some song is playing that I am not sure. So not to feel uncool about that, the name of the song is shown on my mobile screen. So whenever some, oh, you know that song, I know, yeah, I've heard this. Okay, this is from this. Okay, just to be non, just to fit in those kind of people. खाने को थोड़ा बाजू में रखते हैं. Let's focus on this. Yeah. So if left is uh, left, right, top or bottom is null. Mm, if it's null, how would we know if that is null? What's the output the current logic gave? Yeah, output 2, expected is 3. Okay, it gave 1 less. Mm, expected is 0. Okay, we have to check if it's a corner element. If it's a boundary element, then it should not be a boundary element. So how we can check if it's a boundary element? Mm, for that element, left, right, top, bottom, all things should exist. How would we check that? Grid low. कोई सिंपल सा इसका ये होना चाहिए था यार, नोड जैसे लिंक लिस्ट में नोड होता है ना, उसमें सब सारा डेटा पॉइंट्स होता है. इन द सिमिलर फैशन वी शुड हैव समथिंग फॉर द ग्राफ which would say ki what's the top element, bottom element. It would make the life easier while solving such problems. uh, I am the same sometimes. Yeah. Yeah, sometimes we don't fit in the crowd. Sometimes we don't fit in such crowds. I have to check somehow the boundary element. If it's a boundary element, mm, then return. How would I check if the grid? Okay, it's from like, okay, if the elements row, this is a zeroth row. If all the elements are boundary element, these all the elements are boundary element, these all the elements are boundary element, these are all the boundary elements. That means, let me copy this image, paste it here. Okay, so in this one, इसका है 0 0. Okay, this is 0 comma handwriting बहन चोद 0 0.
This is 0th row first column, 0 2 and 0 3. Okay, this one is 1 comma 0, 2 comma 0, 3 comma 0 and 4 comma 0. This one is same, not same, 0 1 2 3 comma 0, no, sorry, 0 comma 3, 1 comma 3, this is 0, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, 0 1 3 2 3 and 3 3. Okay, this is 3 comma 0, this is 3 comma 3, this is 3 comma 1 and 3 comma 2. So if any of the element, like this is the pattern, if it is 3, okay, if column is 3, if it's 0, if either of it is 0, then it's a boundary element for sure. It will cover first row and this. I actually speak a lot less, so the people who laugh and make jokes fit in the friend circle well. So I'm mostly the odd one out. I am just like standing and listening silently. Uh, yeah, but I'll say uh, there is too much power in the small talks. Next time when you are in such conversations, no, try to just gel up with them. Maybe whatever, if they are talking about some series, just Google about it. Oh no, I haven't watched, but I want to watch. क्या है उसमें specially वो, or something about that. Because once you start with the small talks, some of the talks will lead you to your some next big thing. You never know, because I have lived so much uh, through this such kind of experiences. This channel is itself is outcome of a discussion that I had in like from the from the creators talk, creators meeting that I had, because I had another one channel and it was in the spiritual niche. So we all met in the Coimbatore. So all the people were like too good of influencers in some random shit. Everybody is like that, yeah. And from there, that day I missed my flight for that reason, that I should have some talks with this particular guy. One guy I was looking out for, that he also came on this Sandeep Maheshwari show. He had like 45 minutes of interview taken by Sandeep Maheshwari on that, and he was a friend of mine, like friend of friend, like something like that, acquaintance. So I wanted to talk, and I tried to set up a meeting because he was from the Pune, but I couldn't. He couldn't find out a time, even though he replied me on the text. But luckily, at that Coimbatore event, he was there and I was there, and he was right beside me sitting. So I talked with him. I showed him my channel. See, I tried this, I tried that. I started 7 8 different channel. All of them failed. Something this happened, that happened. This channel was also something different. So he clearly told me, don't do this. Don't create videos in this thing. It will not work. I have so many things. So it saved me some years, because he already tried and tested some things, and he clearly at the point he said don't do this. So that means I was on a completely wrong track, and he just saved some time. So next time, just get involved in the small talks. Small talk, I'm also not good at small talks. I also a shy person when in the group, but it helps. Maybe I'm शायद बोर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें मैटर करता है भाई. ओके, सो अगर
if the coordinates has 3 3 or 0 0 0 0, or the last element maybe the size is 4, so number of columns minus 1 uh, is that, or the first, which is like uh, 0, this 0. Okay, so if any row, but you need good people in the crew, right? That's actually true. No, 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 no. Good people, if you want to live or chill with good people or work with the good guys, then there is only one place for that, and that's called heaven, and for that you have to die. There are no good people on the earth. You have to manage. That's not boring, to be honest. That's a good thing, yeah. I have tried so many different things in my life. You guys don't even know. One day I'll share everything. Okay, this 0 0 is fine. This 3. Okay. I'm trying to find a pattern from this one. So all this has like 3. So if a row is equal to uh, rows minus 1 or 0, and same for column equal to columns, all the columns minus 1 or 0, then simply return here. Here. Hmm, शायद दिस ओके रिटर्न, मैं इसके लिए एक दूसरा कंडीशन लिख लेता हूँ ना, कंफ्यूजन ना हो कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया. That's not boring, to be honest. Yeah, nice that you think so. If row equal to 0 or row equal to number of rows, we need number of rows now. Number of rows. Want to be good person in life, then you are chasing wrong thing. Rows minus 1 or column equal to 0 or column equal to false minus 1. Okay, if this is so, means that is this is a boundary condition. Boundary. If I add comments, then will it be helpful for the viewers who are watching in between? But comments I can only add when I only understand the code. अगर मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या comment add करूँगा? Nice, it failed. मतलब मेरे को ऐसे नहीं बोलना था कि गुड पर्सन बनना गलत है. I'm not saying that. Everybody thinks that he is a good person, but good person is a very relative term, and it's not in terms of what you think. It's really in terms of like sometimes people think, oh no, whatever you do good, some people will say, no, this is not right, or this is wrong, or he's a bad person. You just have to be the best version of you, what you are right now. You just, for example, you are you are a bowler in cricket, so and you are bowling at 90 kilometers per hour speed. So as a bowler, your goal shouldn't be like, oh no, I have to be very good person. As a bowler, your goal should be how I can reach from
90 kilometers per hour to for say 110 kilometers per hour. Being good is like if अगर तुम्हें लाइक 1000 लोग पहचानते हैं और 1 करोड़ लोग पहचानते हैं ना, तुम्हारी वैल्यू और डेफिनेशन ऑफ गुडनेस will automatically change. हाँ, लेट नेट ज्ञान बकचोदी बहनचोद, बाकी लीड कोड छोड़ के बाकी सब हो रहा है. हाँ, या ऑनेस्टी. At least honest with ourselves is one, I'll suggest. Honest with others or honest with some situations will backfire you, because if you will be too honest with your manager while working in corporate, it will backfire you. Okay, if you will be too honest with the judge or with the police wala, then it will backfire you. Some things really look good, sound good in paper only, but not in real life. Real life is really fucked up, bro. Real world is really fucked up. मैं भूल गया भाई क्या. जस्ट प्लीज वेट. यस ट्रू. आई थिंक वी शुड टारगेट. ये पढ़ा मैंने. ओके. Now I am completely off the charts of what I was trying to do over here. Boundary condition is this. We are finding the islands. Let me um, rerun this in mind. We'll start from this node, and we shouldn't starting from the node, this node. It doesn't make any sense, starting from this, because it's a boundary. It makes sense. Uh, why are you grinding DSA? I wanna do a good switch this time. I recently did a job switch, and it was good, but it was not up to the mark that I wanted to be. And because I gave this interview process after almost 4.5 years of my first job. So I stayed in my first job for 4.5 years, and then I switched. And while doing so, I understood what the market needs and what are the current requirements of the market are. And based on that, this is the whole picture that I got. Learn Java, grind LeetCode, grind system design, create some good projects, and then appear for the interview, apply for the jobs, and then yeah, be in the good product company. So does that mean ki like you will just be what others force you to be, then you will be adjusted like those people? You are still a unique personality, right? Sorry for disturbing. No, 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 no. What the first line is completely opposite that you said. You just be what you want to be. You just try to be the more. You will. I'll show you. I read this in book, and this is very true. You are. You are this. This is you.
And this is all things that you are trying to be you. If till the time you are in this area na, you will feel something missing, you know, missing something missing, कुछ ना कुछ खराब है, कुछ ये है. You have to be make so many decisions that you have to cut out so many shit out of your life. So in this process, good or bad doesn't matter. It just what feels correct to you. You might have some of your principles, and based on that, you have to align with your you, like the core features of you. So while when this happens, you will, but as a man, you will never enjoy your life. That is what one thing. To be this, there is like the natural order of the world is feminine. Females can reach to this point very quickly, but as a man, I don't know what's problem with us. We try to do difficult things a lot because we think after doing that everything will be nice. Yes, external becomes very great, but the internals is quite fucked up in that time as well. So just try to remove the clutter, extra drama, wrong decisions, wrong things. Sometimes we follow what others are saying is good for us, but really we didn't need that. Maybe after 4 or 5 years of doing that, we understand that. But keep one thing, in if I have to tell you in the terms of numbers, there should be always one thing that should be your core, okay, core feature, and that feature will take you to the miles. Why it will take you to the miles? You have to literally spend 10,000 hours. You might have heard about this rule. It comes from the uh, गैलकॉम मैडवेल समथिंग नाम है उसका, मैडवेल ऐसा कुछ तो नाम है उसका. फ्रॉम हिज बुक कॉल्ड आउटलायर्स, देर आर very such examples are given. So the first core thing of your life should be 10,000 hours. Whatever you are doing, once you do 10,000 hours, then you get a breakthrough in life. This is all things if you wanna be someone in life. Okay, if you wanna be live simple life, not to expect much from life, then the story is completely different. But if you want to do, for example, take a grandmaster or someone, so it takes almost 10,000 hours to be at that position. Or take for example the great Sachin Tendulkar. He achieved this mark at a very early stage in life. Normally, if you spend like 7 8 hours a day, it takes around 9 years to achieve this mark. So this should be the one that you are following always. बाकी सब इसका secondary things है, but one thing should be this. Once you understand what is your one thing that you can do for 10,000 hours, maybe 90% of the life is sorted for you. Even, oh, okay, even I decided to restart. Yeah, you can. I remember a time I used to be able to do these questions in less than, oh nice यार. होता है ऐसे एक बार टच हम छोड़ देते हैं ना प्रैक्टिस, तब हम वी गेट अवे फ्रॉम दिस. मेरे को भी टच में रहना है. One thing also I discussed with one of the subscriber, ne, he was also facing the same problem because we do questions for a week or so, but then कुछ काम आ जाता है, then we couldn't do it. So better now I am that learning graph or any concept, I should take notes. Notes में कहीं लिख के रखना चाहिए कि what are all things I used, what are all patterns I have used, and the code that I understood with the comments. So I should write it with pen and paper, and so next time it will be very easy to get back to that stuff. That's what we have figured out, on the stream only. Like I was done with my placement last July, did nothing for a whole year. To be honest, I have restarted again. अच्छा तो I have oh that's nice. Arnav Sangvi.
And yes, I'm making notes. Yeah, that's really a good point. अपने नोट्स चाहिए, मतलब जो अपने माइंड में माइंड मैप बना हुआ है ना, पुट इट ऑन द पेपर सो दैट नेक्स्ट टाइम वी जस्ट हैव टू रिवाइज इट. अगर नेक्स्ट टाइम हम फिर से रिवाइज करने जाते हैं और वी डोंट हैव द नोट्स, अपने को फिर से ये प्रोसेस में से जाना पड़ेगा. ओके, पीपल आर ड्रॉपिंग, लेट्स फोकस ऑन द goal, which is the problem. uh, okay, so we are starting from here. First this we are passing grid ij is equal to 1 and visited not equal to 1. Then do count plus plus. Okay, then don't do count plus plus actually, no. mm, Check this, if it's this element then we'll return. If any of this condition is this, return. mm, okay, and then visited row this and grid row this, but then we need a count to increase. So if all these condition pass, then uh, I'm doing, हाँ वही, क्या क्या, yes I am making notes, हाँ वही, and same Java में कर रहा हूँ. Oh, that's good, that means we are on the same path. Sure. आर्य सिंह ने भाई अपने में से ज्ञान निकाल लिया भाई, आर्य सिंह ने. And he was saying he's not a good talker, but I see him a very good talker. Maybe you should try to talk with a girl and girl will be impressed with this skill of yours. mm, then count कहाँ बढ़ाएंगे हम, where will we increase the count though, or take the count from here. uh, no, we don't actually need a count, but if that is so, we'll return this and then we have to reset something. uh, so output is 3. mm, so when do we actually need to increase the count? If this, then maybe here we have to do count plus plus. यहाँ पे we have to do count plus plus I guess, and then pass this count to the function int count and then count. Count. Arre, yeah, I'm doing sure. Sure for what? Talking to someone. Guys, can you tell me one thing, because I want to make a good playlist of songs while like doing these things. Can you tell me any song that you listen on loop? That means you really like that song. So can you paste? It can be any from any language. I listen to any language like Japanese, Korean, Tamil, Telugu, Hindi, Marathi, सब कुछ. So tell me one song that you really like. I think the approach is wrong for this problem. Bro, which keyboard are you using? This is F75 Ola keyboard. It has three modes, 2.5 like wireless, wired, and Bluetooth, and it is fucking disgusting keyboard. Never buy this piece of shit. मेरे को इतना इतना वायरलेस पे इतना डिस्टेंस पे चलता है वो, ओनली दिस मच डिस्टेंस. अगर मैं इतना कर दूँ ना तो स्पेस काम नहीं करता है, ज़ीरो नहीं काम करता, मेरे को उसका रिसीवर के पास लेके जाना पड़ता है. सच अ पीस ऑफ सच अ शिट प्रोडक्ट दिस इज.
You are saying this approach is wrong, like this approach will not. अरे यार ये काउंट गलत ही है ना, ये काउंट ऐसे अभी तो श्री साई ने बताया था अपने को कि जावा में काउंट ऐसे नहीं होता है. Integer value is always passed by value and not the reference. So let me do this. Maybe count कहीं और ही बढ़ाना पड़ेगा मेरे को. Any suggestions for this? Maybe we are so off in this problem. I thought it's the same logic. I think the approach is wrong for this problem. Yeah, yeah. I'm also thinking that, bro. Which keyboard? Thinking about you, Frank Ocean. Thinking about you, Frank Ocean. Can you try a standard DFS? Standard DFS काम करेगा क्या? You can't copy someone's test when you will listen to the songs. You will know which are good. नहीं नहीं नहीं. अरे I'll give it a try. No. See, searching from endless things to at least searching with some reference. Approach wrong है. Hmm, तो क्या approach use करना पड़ेगा अपने को? Should I build from scratch the logic? मेरे ख्याल से हमें ये पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है ना कि अगर I'm starting from here, so I should start from here only. This बस ये सब अपने को skip करना है. So I can start from I1 and I can go till row -1 maybe. Okay, क्योंकि लास्ट वाले जो है जैसे हमने यहाँ पे देखा, कहाँ गया, these things we really don't need, these cells, these all cells, so we'll only focus on this. Okay, let's try this approach. mm, but then when we'll do count plus plus, we'll do count plus plus here only. Now ये नहीं. mm, आंखें खुली हो या any output तो चेंज हुआ, expected 0, still it's 1. आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है. No singing songs on the stream. You can't copy someone say yeah. Okay, yeah, yes, I think so. Okay, बार रिसेट मार लो, एक बार रिसेट मार लो. नहीं 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 यार, अभी रात के 1 बज रहा है तो मेरे को फिर से स्क्रैच से अगर करना ही होगा स्क्रैच से, तो आई विल स्टार्ट अ फ्रेश फ्रॉम अ न्यू स्ट्रीम. आई विल जस्ट गिव इट अ ट्राई. अगर चला यहाँ पे तो चला, बिकॉज इट्स एनीवेज फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ द स्ट्रीम. आई यूजुअली डोंट डू दीज मेनी. अगर चला तो चला, नहीं तो हिंदी में कुछ तो कहावत है ना, समथिंग. चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक. You are right, I guess so bro, because I think I need to start from scratch. ये मैंने पुराना लॉजिक ही यूज़ किया है जो मैंने नंबर ऑफ आइलैंड्स और इसके लिए यूज़ किया. यहाँ पे भी आई थिंक आई शुड reset. Let me erase this.
ना स्पेस है भाई ब्राउज़र के पास. I would say just scroll Insta, you can add those songs from popular reels. I don't understand this problem. ये इंग्लिश में क्यों ट्रांसलेट कर रहा है ये प्रॉब्लम. अरे यार, ये प्रॉब्लम मुझे तो नहीं समझ में आ रहा. अभी हम उसका थोड़ा ये करते. जस्ट अ सेकंड, मेरे को ब्राउज़र स्टोरेज क्लियर करने दो. आई कैन क्लियर द ब्राउज़र स्टोरेज फ्रॉम हियर. अरे ये नहीं करने देता. दीदा, मेरे को पुराना काम मिटाना अच्छा नहीं लगता यार. अपना अंश चाहिए हर जगह. अरे अभी भी क्या भाई, तुतुल पुतुल कहाँ लिखा है हमने? और पूरा हैश मैप और इतने दिन का जो लिखा हुआ था ये जा रहा है. सो या ठीक है, गया भाई फाइनली. ठीक है, ये क्वेश्चन को शुरुआत से करते हैं. शुरुआत से एकदम. आई एम फ्रॉम COAP by the way. You are from VJTI, right? Right, just saw your LinkedIn. Yeah, I am from VJTI. Oh, so you are from Pune only. Are you like in the college right now or what? So, what is the current? My brother is from COAP college. या अच्छा, मैंने पिन करके रखा है ना लिंक्डइन, मैंने उसके लिए करके रखा था. नाइस. वी आर अगर देखा जाए तो वी आर एनिमीज ब्रो. यू आर फ्रॉम COAP एंड आई एम फ्रॉम VJTI, सो वी आर एनिमीज बेसिकली. Oh hell nah, COAP is very good college, right? Not more than VJTI, bro. VJTI is the better one. Yes, just got done. Final year will start work from July. That's great, yeah, that's great. Which branch, which stream you are from? There's no more IT, so you might be from computer science or any other branch. I am from KIIT Bhubaneswar. Even from the Bhubaneswar guy also knows COAP college. That's what I really feel sad about, no, my college being so good. None of the other people from Mumbai knows about this college. Yeah, CSC. Okay, that's good. You are a topper then. Yeah, CIP is state government college, VJTI state government college. CIP is rank one. I'll say rank two, and VJTI is rank one. भाई मेरा कॉलेज तो दूर दूर तक नहीं आता. अरे कोई फर्क नहीं पड़ता लाडले, कुछ फर्क नहीं पड़ता कॉलेज का. एट द एंड इस डेस्क पे बैठेगा IIT वाला, इस डेस्क पे बैठेगा NIT वाला, उसके बाजू में बैठेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल XYZ कॉलेज ऐसे. और हम सब एक ही लाइन में बैठेंगे बस. उस बंदे को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा शुरुआत में, तुम्हें थोड़ा कम मिलेगा. जॉब तुम सेम ही जगह करोगे, सब कुछ सेम ही रहेगा. उसमें थोड़ा ईगो ज़्यादा होगा, तुम में कम होगा. नो वन केयर्स अबाउट कॉलेज. या इट्स योर स्किल. यस bro, I have worked in different kinds of industries. I have worked in supply chain, I have worked in purely manufacturing industry. You don't know what different kinds of experience I have. कॉलेज तुम्हारा दूर दूर तक मैटर ही नहीं करता. जब तक कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें किसी को पता भी नहीं चलता कि कॉलेज क्या है. यहाँ पे नहीं लिखा होता कॉलेज. जस्ट फॉर इनिशियल कॉलेज, हाँ इनिशियल प्लेसमेंट के लिए इट जस्ट गिव्स अ गुड स्टार्ट. उसके बाद तुम्हारे ऊपर है. एक स्टार्ट के बाद एवरीबडी आफ्टर 3 or 4 years everybody is almost at the same level.
Don't worry about your college. या तुम कहाँ प्लेस हुए हो? uh, Arnav Sangvi, where did you get placed, bro? Bro, so my stream has reached to COAP but not yet reached to VJTI, you know. When it will reach to VJTI, I'll be happy. Oh, thanks for telling that. Yeah, +1, yes. College doesn't matter. Just try to make a good circle of people around you, know. जो भी कॉलेज में हो वहाँ पे तुम सीनियर्स वगैरह सबकी जान पहचान कर लो, बातें करो उनसे, मेक अ गुड नेटवर्क ऑफ पीपल, बिकॉज यू नो जितना सोशलाइजिंग तुम कॉलेज में कर सकते हो, जितना अच्छा तुम्हारा नेटवर्क कॉलेज में बनेगा, उतना उतना कभी नहीं बनेगा तुम्हारा। और वो कॉलेज के जो नेटवर्क है ना, वो तुम्हें कभी भी जॉब दे सकते हैं, मतलब रेफरल दे सकते हैं। तुम मतलब इफ़ यू आर फ्रॉम अ हॉस्टल एंड कोई हॉस्टल का सीनियर है एंड मे बी आफ्टर 5 6 ईयर ही गॉट प्लेस्ड इन टू गूगल एंड यू आर ट्राइंग टू बी इन गूगल, he can easily give you an referral. डॉश बैंक, या नाइस। डॉश बैंक तो इधर ही है यार, ऑफिस मेरे बाजू में ही ऑफिस। इट्स इन एरवाड़ा ना, एरवाड़ा's ऑफिस यू गॉट प्लेस्ड। आई हैव सम फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स इन देयर। हाउ इज प्रेप ब्रो? You can see that, you can see that both the test cases have failed, so it's going good. I would say मेरे को थोड़ा ये करना पड़ेगा यार। मैं सोच रहा था कि मैं स्ट्रीम एंड करूं, बट अभी वॉचिंग इतनी बढ़ गई है कि अब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। गाइज हाँ, प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम यार। I have solved 4 questions on this stream today, so please do like the stream. uh, मैंने तो ऑनलाइन कॉलेज चुना, इसलिए ऑफलाइन में तो पूरा टाइम ही खा जाते हैं। 5 मिनट का कंसेप्ट 5 घंटा। भाई मोटिवेटर द डिवाइस, तुम्हारा नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इंडिया में कोई भी कॉलेज, मतलब अब इंडिया का तो मैं बोल सकता हूँ, इंडिया में कोई भी कॉलेज में तुम जा रहे हो तो पढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं जा रहे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पेसिफिकली। क्योंकि पढ़ाई छोड़ के बाकी सब होता है वहाँ पे, पढ़ाई कुछ नहीं होता। नो बडी केयर्स और नो बडी अंडरस्टैंड्स वॉट प्रोफेसर इज लिटरली टीचिंग, एंड जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो इट फार रेयरली यूजफुल in your placements or in your careers and all. If you are going to the college, the main motto of the college is to change your personality, you know. You get so much of exposure in the college. You can be part of different events, you can be part of racing events, some cultural event as well, technical events, kuch bhi, and you get chance to speak, you get chance to socialize, you get chance to create network। ये करने के लिए, और मज़े और बकचोदी मज़े, अच्छे फ्रेंड्स फॉर द लाइफ, इन सब चीज़ों के लिए कॉलेज है मोस्टली। पढ़ाई करने के लिए इज़ जस्ट 2% ऑफ व्हाट द होल कॉलेज कंसेप्ट इज़। क्योंकि तुमने 12वीं तक बहुत पढ़ाई कर करके कोई कॉलेज में गए हो, उसके बाद तुम जा रहे हो कहीं पे, तो थोड़ा एंजॉय करेगा ना इंसान। वाई डोंट वी राइट अ बेसिक डीएफएस फंक्शन फर्स्ट। मेरे कॉलेज में सबकी नज़र for this also I'll say Arya Singh, talking to girls is not a bad thing. You can you can be a good person and go and do a good approach. अपने को ये बोला गया है कि नहीं, गलत है ये सब, कि जिस वर्ड्स में तुमने लिखा है ये गलत बोला जाता है, लेकिन इट्स अ पार्ट, इट शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ। नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। कभी ना कभी तुम्हें सेटल होना ही है, कभी ना कभी शादी करनी है, तो why not now? So go, and if you like somebody, just go and do a good approach. Hey, hi, hello, I found you good, something something, and then talk. This is not bad at all or wrong at all. When I started focusing, all friends got, I like slipped from hands like sand. Before they were like, yeah bro, we are with you 100%.
या पढ़ाई करने के लिए सिर्फ हॉस्टल रूम, वो भी 2-3 घंटा बस और वो भी एग्ज़ाम टाइम पे, बाकी टाइम पे नहीं. But I am now more satisfied with what I choose. Yeah, yeah, that should be the goal. No, अगर तुमने जो choose किया है, you are satisfied with that, you are there then. ये reset ही मारते हैं confirm. जो COAP वाला बंदा अपने को बोल रहा है कि reset मारो, reset मारते हैं और फिर से from scratch we have to build this. So maybe this logic is completely different. That's nice. Guys, please do like the stream here. I can see so many viewers right now. I know before you guys joined, I have solved some questions. Let me recap that number of islands I have solved. Flood fill, it was yesterday's question that I solved of the stream today. Then there was this question, max area of island, that we submitted, and um this was the third problem for the day. And then there is this fourth problem. I thought it's on the same grid lanes of what the other problems are that we chose, but it's not clearly, so I have reset it and I'll start. uh, but I'm no more. DFS लिखना है पहले फर्स्ट, ओके. यार लेकिन DFS कहाँ रैंडमली कहाँ लिखूँ, DFS ही लिखना है. जैसे ये सब प्रॉब्लम्स में है वैसे ही मैं करना चाह रहा था. चेक ऑल डायरेक्शन इज नथिंग बट अ DFS, दिस simple सा DFS, but we don't need a direct DFS over here, I guess so. There is something different. Of course DFS चाहिए ही, but because I'm solving the DFS questions only. You tried DFS? हाँ मैंने अभी जो किया था वो another approach with the DFS किया था. See, this is DFS but calling it recursively. Seems like this approach is far from the correct. So maybe we have to like do like DFS from boundaries for like one only, जहाँ जहाँ पे one है वहाँ वहाँ पे ही अपने को DFS करना है. What Jagdisham is saying. Uh, when I initially came, I actually felt like bad कि they are forcing me to do this bad stuff, not in a positive approach to girls. Usually don't. My parents just went home. I felt so guilty in the first year. Okay. Mark visit to zero on go so you will not reach the same island. हाँ visited तो लिखना ही है. सी ये DFS लॉजिक अपना मेरे को लगता है ऑलमोस्ट करेक्ट है. वी जस्ट नीड टू डू फ्यू ट्विक्स इन दिस. ओके, तो कन्वेंशनल DFS नहीं चलेगा, दिस DFS दैट वी आर डूइंग. सो दिस वन शुड वर्क. ओके, इफ रो दिस कंडीशन आई डोंट थिंक इज रिक्वायर्ड. ये मैंने अभी ऐड किया था. बाकी विजिटेड तो अपने को वो करना ही है. एंड देन दिस. So this DFS logic is apt, I guess, according to me. Uh, the one thing that we have to do is like we can just
visit all this and mark all what he's saying. uh, Mark visit to 0 and go on, so you will not reach the same island. Yeah, so I'm saying this much is correct. It will, because whenever we are here it will go and find each and every top, right, bottom, left, everything. So let me think one more time. यहाँ पे ही अपना गड़बड़ ही है. What chat is saying? uh, you tried DFS. DFS ही है ब्रो यार. आई थिंक बाउंड्री से शुरू करके और फिर एलिमिनेट करना है जो कनेक्टेड है उससे. हाँ, हाँ, मैंने पहले 0 0 से स्टार्ट किया था तो देखो, मैं भी ऑलमोस्ट वही सोच रहा था कि ये बाउंड्री वाले को पहले, ये जो डब्बा है इसको विजिटेड मार्क करके छोड़ दो. ठीक है, और फिर उसके अंदर वाले पे हम फिर फॉर लूप चलाते. आई एम थिंकिंग समथिंग लाइक दिस. तो अगर बस बाउंड्री वाले कैसे मेरे को ढूंढना होगा कि दोज आर ऑल जीरोज, रोज जीरोज. ये मैं कैसे इटरेट करूँगा? फॉर 0 1 2 3, 0 1 2 3, keeping I same and j this, then I, so मेरे को वो करना है somehow. Animesh, people were toxic basically, but who cares? I'm a DSA now. Yeah, remove that. ये सही है. ओके, हाँ, वो मैंने अभी कंडीशन ऐड किया था. वी डोंट नीड सेपरेट. आई एम फीलिंग डेजा वू. Did I did this before? We don't need separate visited. We can use give one array. We can use give one array. एक ही है ना ये visited array. uh, how much you sleep in a day? I guess I am almost sleep 10 hours in a day and 7 hours in night. So maybe this much I sleep, like in hours or shift. भाई बुलियन करके आइलैंड एनक्लोज्ड और आइलैंड टच्ड बाउंड्रीज और नॉट. मेरे को नहीं समझा सीरियसली जो तूने बोला अनिमेश. भाई बुलियन कर ले आइलैंड एनक्लोज्ड और आइलैंड ने, बुलियन वाले पे नहीं जाना है मेरे को, वो विजिटेड ही रखना है, बिकॉज विच आई हैव अंडरस्टूड. एक काम करो ना, वाई डोंट यू इटरेट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बाउंड्री? अरे वो ही तो कर रहा हूँ यहाँ पे. देन जस्ट चेक कि विच ग्रिड इज वन एंड इफ दैट सेल इज अनविजिटेड. या वही तो ये है. ये मेरे को, मैं 90% श्योर हूँ ये सही है भाई. DFS वाला लॉजिक. द प्रॉब्लम इज हियर ओनली the way we are doing this. Yeah, Shri Sai back. Welcome back bro. भाई एनिमेश लाइक कर देना है स्ट्रीम को. देन जस्ट चेक कि विच ग्रिड इज वन. वो चेक किया. यूज ग्रिड ओनली इफ वी फाइंड वन इन द ग्रिड स्टार्ट DFS. if we find one in the grid start DFS. make sure all its ones to 0, count it and go forward. ओके, ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है. यूज ग्रिड ओनली इफ यू फाइंड वन, यही सही है मेरे ख्याल से. अगर वन है, हाँ वही तो किया है. देखो ना जगदीश, हम अगर वन है
और नॉट विजिटेड है तभी अंदर जा रहा हूँ, काउंट बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये काउंट तब नहीं बढ़ना चाहिए जब ये लास्ट एलिमेंट है। तो मेरे को समथिंग, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आई विल राइट वन मोर फॉर लूप। रुको रुको राइट गाइस, रुको रुको, अब मेरे को चमका ये, क्योंकि मेरे को बाहर वाले सब एलिमेंट्स को विजिटेड मार्क करके देना है ताकि मैं अंदर जाऊँ ही ना उसके। तो फॉर द फर्स्ट रो लाइक दिस 0 0 0, तो कैसा लूप चलेगा? 0 दिस and this. Okay, so in this one I have to just mark all visited true, visited I j is equal to 1। रुको, अभी अभी ये सही नहीं है, अभी ये सही नहीं है। uh, it's marking all the elements 0, but I need to have constraint I equal to 0। okay, I can't be equal to this, and I equal to for I equal to 0 or I equal to number of rows minus 1। okay, and j 0 and j equal to, ये सिंटैक्स मेरे को देखना पड़ेगा, बट ये प्लस प्लस नहीं होगा, ये और होगा मेरे ख्याल से। let me check this syntax, let me correct this syntax, correct this syntax। ए साला, correct my Java syntax, go deep, paste here this, yeah, I only want for two values, I only want to run for specific two values of each ij. How can I? To run for only specific water indices without looping through the entire grid, you can use separate loops. For this is much faster because it skips the middle cells completely. Uh, okay, I0 and this, I3 and this. So there are some elements, उनका 3 3 भी है ना, ये वाला भी है, तो ये तो कभी अचीव नहीं होगा इससे। नो, suppose there's a box of 4 चौक 16, 16 elements, and I want to just iterate on the boundary elements. How can I? To iterate only on the boundary element 16, you can use explicit indexing loop. Okay, I'm taking this logic for now. I'm taking this logic for now, saying this is wrong.
if this or this, then mark it as visited. If this, then no, no, our condition will not work. If this, then mark visited this, this. Okay, this is correct. This is 100% correct. Okay, and if वेट गाइज मैं आता हूँ चैट पे ना, मेरे को थोड़ा सा ये हुआ है तो मैं एक बार ट्राई मार लेता हूँ, अगर नहीं होता है तो आई टेक योर हेल्प. Visited this rows -1 in J. Okay, if this is equal to anything, so I don't care, I guess, about this, and I just need this much. यहाँ पे हम 0 से भी स्टार्ट करेंगे, अगर ये है तो फिर is there syntax error, visited equal to 1, and यहाँ पे भी visited. गाइस एक सेकंड ना, मैं देखता हूँ, एक सेकंड व्हाट यू ऑल आर सेइंग. क्या बोल रहे हो तुम गाइस? यूज ग्रिड मैंने पढ़ा था, बैक नहीं, नॉट देयर इन द मेन फंक्शन, जस्ट कॉल dfs इन द बाउंड्री सेल्स एंड देन जस्ट सी व्हाट इज अनविजिटेड. ठीक है, तो एक काम कर, dfs सारे बाउंड्री पे, नो नीड टू डिटरमाइन. हो गया सॉल्व. Maybe this is still wrong. Okay, I'm taking a little help. So it's saying we have to run a BFS in this one. Sorry, DFS in this one. ये पहले का सही था, if वाला ही सही था अपना. ग्रिड इक्वल टू 1 है, तो इसके अंदर अपने को वो रन करना है DFS चेक ऑल डायरेक्शंस. काउंट नहीं करना है बस. ग्रिड I is 0, J and visited, and similarly if यहाँ पे चाहिए ग्रिड
अगर दिस इक्वल टू 1 है तो उसके अंदर भी अपने को सेम चीज करना होगा। ये visited, but just this rows minus 1 will be this and this j. Similarly यहाँ पे भी if say grid is equal to 1, then in this one we have to do this grid I and j will become 0, so that the last element will be marked just visited and not counted, because our DFS function is doing that. I am guessing so. Okay, equal to 1, and then again do this, buddy, do this time I and columns I minus 1. Okay, एंड देन ये नीचे वाला फिर से करेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं शायद, तो वो सही है क्योंकि पहले हम काउंट नहीं कर रहे। ओके, एक केस पास हुआ, लेट्स सी हाउ मेनी केसेस इट्स पासिंग। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, 7 आउट ऑफ 60 आर पास्ड। ओके 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 ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट चैट इज। डीएफएस को सर बाउंड्री सेल्स पे रन करना। अरे बाउंड्री सेल पे ही किया ना रन, ये क्या बाउंड्री सेल पे रन किया। इटरेट लेफ्ट एंड राइट बाउंड्रीज लाइक ग्रिड, वही किया मैंने। दीज आर लेफ्ट एंड राइट बाउंड्रीज फॉर टॉप एंड बॉटम, डू द सेम एंड देन चेक विच ग्रिड। हाँ वही किया है दोस्त, अभी मैंने पहले बस visited मार्क किया था, but now I'm doing like check all direction, and inside this it's already marking as a visited if all of these condition are failing. Okay, then are you using any external mic? No background, there is no background noise here, there is no background noise at all here. वही किया यार मैंने, अर्नव इसके अंदर ही DFS किया है। पहले पहले पूरे रो के लिए, एक्सटर्नल रो के लिए, देन एक्सटर्नल कॉलम के लिए। I'll mark it as internal scan. यहाँ पे मैंने I1 लिया है, I should be 0 I guess, I should be 0 I guess। 1 क्यों लिया था मैंने? Oh, it still failed। 7 का ज़्यादा हुआ क्या? नहीं 7 ही है। J0 I -1, क्या बोल रहे हो तुम लोग? यहाँ मैंने -1 करके रखा है शायद, क्योंकि वो मेरे को, नो नॉट हियर, हियर, क्योंकि मैंने 1 और रो माइनस और कॉलम माइनस किया हुआ था। नो, इट डिडंट मेक एनी चेंज। अगर हमने पहले ही डीएफएस कर लिया है तो फिर से यहाँ डीएफएस की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, इट वर्कड, क्योंकि एक बार डीएफएस किया हमने। इट वर्कड गाइस। क्या बोल रहे हो तुम लोग?
Why are you calling the check? Okay, I just saw your message, Arnav. शायद I should have seen this. मैंने कमेंट आउट किया उसको. वो पहले का कोड था, मैंने उसको हटाया नहीं. I thought it's correct. Just increment count ना. For how many hours can you sit on a table chair? I can't sit more than 1 hour. डू यू कोड ऑन बेड? यस, बेड पे भी कोड करता हूँ, सपने में भी कोड करता हूँ, सोते हुए, खाते समय, हर जगह कोड करता हूँ. इफ़ आई इक्वल टू ज़ीरो, जे इक्वल टू ज़ीरो, आई इक्वल टू एन माइनस वन, जे एम माइनस वन, ऐसे करके देखो, एक बार में कर दो. लेट्स गो या. मज़ा आ गया. अरे ये पहले का लिखा हुआ था, पहले मैं इधर अंदर से विजिट कर रहा था. आई थॉट डबल लूप, फिर तुमने बोला और ये किया. ये जो है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो इंट्यूशन है, जो पहले ये थॉट था, इसको मैंने कंटिन्यू नहीं, परस्यू नहीं किया आगे शुरुआत में. दैट इज़ माय फर्स्ट मिस्टेक. दिस वाज द करेक्ट इंट्यूशन दैट आई गॉट कि एक्सटर्नल को मेरे को छोड़ना है. दिस ऑल, बस आई वांटेड टू थिंक कि हाउ आई कैन बिल्ड अ पैटर्न सो दैट ओनली एक्सटर्नल वाला आई कैन स्किप. उसके बाद वाला मैं नहीं सोच पाया, विच वॉज दिस लॉजिक कि ये कैसे मेरे को एक्सटर्नल बाउंड्रीज वाला लेना है. कीपिंग वन कांस्टेंट, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहीं पे. बाकी बाकी ये तो ऑलमोस्ट सही था. काउंट प्लस प्लस, ये लॉजिक ऑलमोस्ट, ये भी लॉजिक पहले का ही है. सी, आई शो यू एग्जैक्टली. आई गो देवा. सी, एग्जैक्टली यही लॉजिक है. चेक ऑल डायरेक्शन, ये बी एफ एस, सॉरी डी एफ एस वाला लॉजिक ज़रा भी नहीं बदला है, बस अंदर का ही. यही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा था. सी दिस लॉजिक, आई थॉट जो नंबर ऑफ आइलैंड में एक बार लॉजिक बनाया उसको ही कंटिन्यू करते, काउंट प्लस प्लस और चेक ऑल डायरेक्शंस. बट नो, इसमें पहले सब निकालना था और उसके बाद में बस काउंट प्लस प्लस करना था. ओके, मज़ा आ गया. नाइस. ये मज़ा मैं पूरे इंडिया को देना चाहता हूँ. रिफ्रेश हो गया थोड़ा. आई विश टू स्टार्ट डी एस ए अगेन. होपफुली कल से मोटिवेशन आएगा आपका स्ट्रीम देख के. आज भाई, आज क्यों नहीं मोटिवेशन आया? गाइज प्लीज़ डू लाइक द स्ट्रीम यार. आज हमने 4 प्रॉब्लम कर लिए, वो भी ग्राफ के. आई नेवर थॉट कि मैं 4 प्रॉब्लम्स कर लूँगा ऑन स्ट्रीम. सो गाइज प्लीज़ डू लाइक द स्ट्रीम यार. इफ़ यू वांना सी मी अगेन streaming again, bang my head again against such stupid questions, then please do like the stream. I'm not asking you to subscribe to the channel yet, but just like the stream so that whenever you come online next time and I come online and I stream again next time, it will show you in your shorts feed or maybe your home page. Then you can again tune back in, and if you like that kind of shit, then do like subscribing to the channel. But for now, just like the stream. That's it. इसमें भाई थिंकिंग रिवर्स करना था. यस, नाइस वन. योर ग्रिड आई इक्वल टू वन एज अ स्ट्रिंग. योर ग्रिड आई इक्वल टू वन, नहीं नहीं, वो दूसरे प्रॉब्लम का था यार. नाइस वन, थैंक्स सारिया सिंह. अपना डिस्कशन बीच में रह गया. ट्राई मेकिंग दैट एज इंट. नाइस ट्राई. ट्राई मेकिंग दैट एज इंट कहाँ है? कहाँ कहाँ ब्रो? वो शायद तुमने दूसरे प्रॉब्लम का देखा यार. यहाँ पे था, कहाँ गया वो? इसमें ये नंबर ऑफ आइलैंड का था, इसमें कैरेक्टर ही दिया था, इसलिए ये कैरेक्टर है, इसमें नहीं है. शायद तुमने गलत देखा, अर्नव. गाइज आई एम नॉट सीइंग द लाइक्स टुडे. इज देयर समथिंग रॉन्ग दैट आई एम डूइंग और समथिंग दैट यू आर नॉट लाइकिंग इट? इफ नॉट, बिकॉज आई कैन सी ऑलमोस्ट 300 व्यूज, सो प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम गाइज. अब मैं नहीं बोल रहा बार बार. मे बी वो पहले प्रॉब्लम, हाँ वही, वो दैट्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, नंबर ऑफ आइलैंड्स का प्रॉब्लम. In number of islands में they have given island in the string form, like character form, so it's a character 2D matrix. I guess we have solved many questions on this same DFS pattern. Then that's what I'm saying bro. I usually get 15 to 20, but even though there are many views, I am not seeing many likes.
बिकॉज इससे guys, please यार, please do like the stream. I'm about to end the stream. If you wanna tune in again, please do like the stream then. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करें क्या कोई? लेट मी आस्क चैट जीपीटी कि ऐसा सेम, डू यू गाइज नो एनी सिमिलर प्रॉब्लम लाइक दिस, इसके तरह ही जो नंबर ऑफ आइलैंड वाला प्रॉब्लम था, फ्लड फिल वाला प्रॉब्लम था, दोज आर ऑन द सेम लाइन्स एंड दिस वन, इसका क्या नाम था, नंबर ऑफ एनक्लेव्स इज ऑन द सिमिलर लाइन्स. बिकॉज एक पैटर्न है, एक पैटर्न में पूरा 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, देन आई विल राइट इट इन माई नोटबुक कि ये पैटर्न है और ऐसे ऐसे है, देन इट विल बी सिंपल वाइल डूइंग द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लीड कोड प्रॉब्लम्स. Guys, please tell me if there is any such problem that I can solve. A similar problem, उसमें BFS वगैरह नहीं, DFS ही, यही पैटर्न और यही सेम ग्राफ. Maybe surrounded regions is one, I guess. एक और सेम पैटर्न, यार मैं अभी थक गया हूँ ना बहुत ज़्यादा ही. सराउंडेड रीजन्स अनिमेश ने बोला, नीचे सिमिलर क्वेश्चन को चेक करो, वो थोड़ा अलग दिखा रहा है. सिमिलर क्वेश्चन हम सबमिट कर रहे हैं ना, वो अलग लाइन पे ले जा रहा है, वो बोल रहा है सिमिलर ग्राफ क्वेश्चन तुम करो. ये नहीं दिखा रहा. एनिमेश ने सही कहा है, शायद वो अलग करते हैं सराउंडेड रीजन्स. लेट मी कॉपी दैट, सराउंडेड रीजन्स. गाइज अगर तुम लाइक करोगे मैं तभी सॉल्व करूंगा, नहीं तो मैं सोने जाऊंगा भाई. सैटरडे नाइट है, थोड़ा मूवी वूवी देख लूंगा, सो जाऊंगा. नीचे सिमिलर वो बताया, रोटिंग ऑरेंजेस पे आते हैं. रोटिंग ऑरेंजेस थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है वो. इट्स अ मस्ट डू फ्रॉम द ग्राफ, बट इट्स फॉर दैट आई हैव टू लर्न BFS एज वेल. मैंने अभी BFS नहीं किया है, आई एम जस्ट ऑन द हाफ पार्ट ऑफ द ग्राफ. DFS, उसमें भी DFS में भी देर आर 5 डिफरेंट पैटर्न्स. दिस इज वन पैटर्न. देर इज सम रेलिंग और सम अदर पैटर्न्स एज वेल. सो उसके स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस करूंगा. आई विल पुट अ नोट ऑन दैट बिकॉज देर आर 5 पैटर्न्स विच यूजेस DFS ओनली, BFS नहीं बोल रहा हूँ मैं. सो देर आर सम पैटर्न्स. यार अगर मेरे को लाइक आते तभी मैं कंटिन्यू करूँगा. दैट मीन्स एटलीस्ट आई विल नो कि यू गाइज वांट दिस, एल्स आई विल जस्ट ड्रॉप बिकॉज मे बी इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस देन. So I'll wait for 2 minutes and I'll see if I can get at least 3 more likes, then I'll continue, else I'll drop. Damn, there are lot of types. Yes. I'm making notes now. I'll put a post on my same YouTube page कि कौन कौन से patterns है, and then I'll do that कि तुम लोगों को भी आ जाए. There are some sites which suggest us which pattern to follow for which type of problem. Pacific Atlantic water flow. Pacific Atlantic water flow. Is it on the same line? Looks similar. इसमें list of integer है, which is a typical graph adjacent list pattern. रात को भाई ऑलमोस्ट 2 बज रहे, 2 बजे इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ सकता हूँ. ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है पढ़ने में. इनफ एनर्जी. Damn, there are, if you have energy to do, you must. Surrounded regions looks easy. Surrounded regions कर लो भाई. तुम लोगों को easy लग रहा है यार, मेरे को मेरा इधर फट रहा है पूरा करने में. I'm not still not seeing that many likes, so I'm confused. Should I do or shouldn't I?
कल सब लोगों का संडे ही है ना, तो क्या करते, विल डू वन थिंग, लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर चला तो चला, नहीं चला तो फिर कल देखते। चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक, शाम तक। ओके, लेट्स रीड। सराउंडेड रीजन्स कर लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम लोग बताओ भाई कैसे करना, तुम लोग ही बता रहे हो ऑफ कोर्स, बट बताओ तुम लोग, तो मैं लिखता हूँ। देखो, जो ये अनिमेश कर रहा है ना, वैसे बिल्कुल मत करो कि एकदम से सॉल्यूशन दे देना, तो मज़ा चला जाता है उसका पूरा प्रोसेस का। अनिमेश, Animesh is a legendary person, but we are not, so we have to go through the process. You are given an array again, given an matrix board containing letters x and 0. Uh, Capture the regions that are surrounded. Let me first check the likes and then I'll decide. If I can see 14, then I'll do. No, I can see 12 only. Okay, till then I'll just read the question. X and 0 capture regions that are surrounded. You are given an m cross n matrix board. मेरा पूरा शर्ट गीला हो चुका है भाई बैठ के। I'm using this. Connect a cell. Connect a cell is connected to adjacent cells horizontally or vertically. ठीक है. Region. Regions to form region connect every zero cell. A region is surrounded if none of the zero cells in that region are on the edge of the board. Such regions are completely enclosed by X cells. To capture a to capture a surrounded region, replace all zeros with X in place within the original board. You do not need to return anything. Okay, I got few likes, so I have to do it now. क्वेश्चन ही नहीं समझा अभी मेरे को एक बार पढ़ के कि एक्स एक्स दिया है, ये कैप्चर का गेम हो रहा है क्या? This is given, output this. Okay, what it means, in the above diagram the bottom region is not captured because it is on the edge of the board and cannot and cannot be captured. So we have to capture all the O's or zeros. It is a zero or O, whatever. I will just copy, we'll say it's an O. So we have to capture all the O, just that ये सेम ही है ना जो बाउंड्री वाला था. बाउंड्री पे मतलब स्किप कर रहे थे, यहाँ पे भी स्किप ही करेंगे. सो वो लॉजिक तो आगे कंटिन्यू होगा, दैट्स वन थिंग. अंदर का भी लॉजिक सेम होगा, बस जो अंदर हम बाउंड्री वाले पे हमें कुछ नहीं करना है. विजिटेड नाउ, अभी जो हमने पढ़ा उसके बाद अनिमेश का कमेंट काम में आएगा. पहले ही बता देता है भाई कि नहीं ऐसा कर. विल कम टू अनिमेश कमेंट. Okay, region is not captured because it is on the edge of the board and cannot be surrounded. Board x, output x. तो हमें क्या करना होगा, जो अंदर, लेट्स ओपन दिस लॉजिक अभी का. कहाँ गया वो? यही था ना. नहीं, ये नहीं था. ई साला, क्या था वो क्वेश्चन का नाम अपने? सराउंडेड एनक्लेव्स कुछ तो नाम था ना. नंबर ऑफ एनक्लेव्स था शायद.
तो इसमें हमने क्या किया, आई गो, हाँ, include something, number of enclaves. ये लॉजिक वी हैव टू यूज एज इज, बंद हो जा भाई, ये बंद हो जा भाई. I am doing it on very low energy right now, but now that you guys have liked, I have to do it anyways. बाउंड्री वाले अपने को छोड़ देने हैं, तो बाउंड्री वाले पे अपन क्या करेंगे, बस विजिटेड मार्क करेंगे और छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे उसको. फिर अंदर वाले जो है, अगर एक्स ओ है उसको एक्स एक्स करेंगे, मेरे ख्याल से ठीक है, इतना ही ठीक है. ए, इसकी माँ का क्या गिरा, बहनचोद. तो यही वाला लॉजिक एक बार उठा लेते हैं, ठीक है. उसमें विल डू चेंज, क्योंकि अभी मेरे में ताकत नहीं है कि मैं शुरुआत से शुरू करूँ. इसमें अपने को आई गेस वी जस्ट हैव टू डू मार्क एज विजिटेड. आई विल नॉट राइट कोड डायरेक्टली, मैंने अभी जो गलती की वो नहीं करूँगा. अबे यार, अबे बंद हो गया क्या? दैट्स वाई आई हेट फकिंग मैकबुक्स. यहाँ पे दिख रहा है ये ओपन है, अब बहन चोद ये ओपन नहीं होगा. हट साला. छूटा मैकबुक. और क्या था, एनक्लेव्स. इसका टैब मैनेजमेंट बहुत ही घटिया है मैकबुक का. ठीक है, यहाँ पे I'll see mark as visited for now. We'll think of it कि बस mark as visited यहाँ पे भी, यहाँ पे will don't need this and mark as visited, and यहाँ पे भी we don't need but mark as visited, ठीक है. एंड इसके अंदर जाके काउंट प्लस प्लस करने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे. अपने को अपने को जो आउटपुट देना है दैट इज़ बोर्ड, सो दैट इज़ बोर्ड. एंड ये सब, ये बोर्ड, ये बोर्ड, ठीक है. इसमें भी बोर्ड बोर्ड कर लेते हैं, कमेंट्स में भी बोर्ड बोर्ड बोर्ड. एंड और ये जब इंटरनल स्कैन होगा ना, यहाँ पे अगर ये बोर्ड 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 और ये अगर अपना ज़ीरो है, अपने को पता नहीं है ज़ीरो है ओ है, नीचे ओ लिखा है डायग्राम में, यहाँ ज़ीरो लिखा है. मतलब एक प्रॉब्लम को कैसे मुश्किल से मुश्किल किया जाए ये इनसे सीखो. यहाँ ओ है और यहाँ ज़ीरो लिखा है. मदरफकर्स. देन डू convert convert this to x, convert this to x, okay. And then let me get this uh, DFS logic and let me paste it here, okay. And in this one, this is a char, so maybe I'll use char.
और वो नाम चेंज करे, रहने दे, करे, रहने दे, कर ही लेते, इसको बोर्ड कर ही लेते, इसको बोर्ड, 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 बोर्ड। ठीक है, तो अभी एक बार दिमाग लगाते हैं। अभी इसको इसके अंदर जाके मार्क चार्ट क्या कह रही है? चार्ट कुछ नहीं कह रही, चार्ट भी स्लीपी है। खुद सो रहे हो और मेरे से प्रॉब्लम करवा रहे हो, क्या फैंटेसी है तुम लोगों की भाई। इसके अंदर मैं बस विजिटेड मार्क कर दूंगा। ठीक है, मैं एक बार सोच रहा हूँ कि मैंने ये सारे कॉर्नर वाले विजिट कर दिए, उसके बाद हाँ ठीक है, मेरे को ये सही लग रहा है, लग तो रहा है सही मेरे को। तो ये विजिटेड वाला एक बार लिख लेते हैं। नहीं, लेकिन इसके अंदर भी विजिटेड हो रहा है, तो रहने दे क्या DFS ही? मेरे ख्याल से यही रहने देते, जो पहले चला हुआ है उसको नहीं छेड़ते कि उसके अंदर जाके तू विजिटेड मार्क कर दे। हम एक्स में नहीं कन्वर्ट कर रहे तेरे को, बस इसके अंदर अपना कोई एक्स और 10 वाला कोई लॉजिक है क्या? विजिटेड नहीं। ठीक है, आई एम गेसिंग सो, लेट्स ट्राई। इक्वल टू एक्स, नॉट अ स्टेटमेंट, लाइन नंबर 34। इक्वल टू नहीं, इक्वल टू एक्स। रिटर्न वैल्यू, अच्छा रिटर्न वैल्यू वाइड, ई ई रिटर्न वैल्यू वाइड, return value void, and then we don't need return or what. Now how it will know कि what's the output is? एक केस पास हो गया, how the fuck it's taking output if we are not outputting the, I'm not sure. एक केस पास हो गया, let's submit it. I'm trying to solve. Okay, 3 out of 59 cases passed. We are not even pass, we don't have any passing marks. अरे ये void कैसे है भाई? void है, ठीक है। मैंने तो नहीं चेंज किया, नहीं मैंने नहीं चेंज किया, ये वॉइड ही है मेरे ख्याल से। काउंट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, काउंट नहीं चाहिए। ए ये देखो ओला 57 बहनचोद 5000 का कीबोर्ड। रोज बोर्ड लेंथ और रोज दिस एंड दैट, so maybe get in this, if row less than 0, visited 1, I marked it visited 0, sorry visited as 1, then what? Hmm, दिमाग बहुत कम चल रहा है अभी। ओके guys, please like the stream यार, I can see 15 almost concurrent viewers, but you guys are not liking the stream. You asked me to do this question, I said I'll only do this if I get 15 likes, but I am stuck on 14. So any one of you haven't liked the stream, then please do like the stream yaar. If you want to see my ugly face again next time, then you have to like the stream. Yeah, somebody liked it, thanks for that. Hey, somebody disliked it again. Hey buddy, what are you doing bro? I saw somebody disliked it. ना करे भाईजान, अभी कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा, इतनी देर तक सब दे रहे थे पटापट पटापट। अभी बताओ भाई, अब मैं नहीं लगा रहा दिमाग भाई।
हमने ये कर लिया जे और कॉलम्स और रो, ठीक है। जीरो मीन्स ऑल द 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, then row minus 1, that is like 3 minus 1, 2, 1, 0, and j equal to 1, yeah, last row, last column. Then similarly this and similarly this. Okay, now I'm doing internal scan. So internal scan के लिए board is this and it's not visited, then mark it as X. Okay, but then inside this, is it something wrong? 26 test passed for you. No, for your code maybe. For me, it just 3 cases passed. Are you using the same approach or you are using the different approach? मे बी ये मेरा लॉजिक एक बार चेक करना पड़ेगा जो मैंने उठाया हुआ है पहले से। एम आई यूजिंग एनी एग्जिस्टिंग थिंग्स रॉन्गली ओवर हियर? एग्जिस्टिंग कोड देख लेते। ओके ओके, बोर्ड इज कैरेक्टर ब्रो, और मैं 1 देख रहा हूँ यहाँ। इफ इट्स एक्स, if it's X or if it's O, we have to mark it as visited. Should be O. दिल का जो हाल है वो तुम्हें कैसे कहने को बोलो न क्या कहे, ये जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, माने नहीं शर्म बिल्कुल खटारा है, तो कहे क्यों बेकरार, तू करे तू मुझसे प्यार, दिल का जो हाल है वो तुझे। हमने कुछ तो उल्टा कर रहे हैं मेरे ख्याल से ना। लेट्स सबमिट। अभी भी 3 ही केस आ रहे होंगे। और 24 टेस्ट केसेस पास। इसने कितना बोला मेरे को, अर्नो ने? अर्नो से 26 स्टिल यू आर लीडिंग ब्रो। तू लास्ट में रिमेनिंग 0 फ्लिप किया क्या? नहीं नहीं, लास्ट में 0 हैव यू? शुरू 0 से करना है। हाँ, 0 से ही शुरू किया है, दोनों टाइम 0 से ही शुरू किया है, ठीक है। बाउंड्री जीरोज आर सेफ, ओके। डीएफएस फ्रॉम बाउंड्री एंड फ्लिप रिमेनिंग जीरोज। मैंने वही किया है शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। दिस शुड बी, ये गलत है, और विजिटेड ट्रू। ऐसी गलती मैं कहीं और कर रहा हूँ क्या? बताओ एक बार यार। चैट, चैट, प्लीज़ हेल्प मी चैट। If it's not 0, then we have to return, I guess, when it's x. When it's x, when we have to continue. Yeah, it worked. It worked, guys. चल गया बैंड चोद।
पुराना लॉजिक जो कॉपी किया था ना वो सही था, बस उसमें मैंने वो 1 और 2, 1 और 0 वो लिख के रखा था, एक कैरेक्टर है ये बस चेंज करना था मेरे को। और ये नॉट, क्योंकि जब x है तभी आगे जाना है, जब जीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तब। तो दैट इज़, और मे बी इसको मैं अगर नॉट इक्वल टू की जगह अगर x करूँ, x ही है ना ये। एक सेकंड में आता हूँ, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आई विल बी बैक। अगर मैं इसको x करूँ तब भी ये चलेगा मेरे ख्याल से। डबल इक्वल टू भाईजान। यस। ओके, somebody is saying something. गुड बॉय बैन चो। भाई एरे पर ही अटका हूँ इतने महीनों से कि लॉजिक समझ जाता है, पर डी करने का मन नहीं करता। हाउ टू मास्टर एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। भाई सिंपल सी चीज़ है, अभी एक वो एक्सकेलेटर बंद हो गया मेरा। पेन एंड पेपर से करो यार, मतलब जितना तुम ऐसे ड्रॉ करके अपना लॉजिक, अभी मैंने बहुत सारे लॉजिक मिटा दिए यार, मैंने मस्त से लिखे हुए थे यहाँ पे। मैं पूरा कोड हाथ से लिखता हूँ पहले, कोई भी नया पैटर्न है ना उसको लिख लेता हूँ मैं। लिंक लिस्ट हो, सिंपल कुछ भी, एरेज हो, ये हो। ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम जिसमें पैटर्न है। डीपी वगैरह में कुछ ऐसा डायग्राम बना नहीं सकते तुम, लेकिन जहाँ पे डायग्राम वायग्राम बना सकते हो बना लो, जब तक वो अपने दिमाग में नहीं घुसेगा ना, डायग्राम बना के देखो वो कैसे चलता है। आ, सब कुछ वैसे ही मास्टर करना, फॉलो। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आई हैव एक्सप्लेन द एग्जैक्ट स्टेप्स। यू कैन check it on my videos because you are in the first phase of the solving problems, linked list, stack queues. So these are from the first 50 problems that you should solve, and for that 50 problems, how to solve those and what's the correct approach, I have posted a video on this same channel. You can see that I have told that, I have explained that in detail. You can refer to that. रेफर द वीडियो ब्रो, कृतिक चस चास्कर। भाई इसको एकदम नोटपैड में अच्छे से याद कर लेना, मैं भी नोट बनाएगा। हाँ हाँ मैं बना रहा हूँ। भाई बीट्स 99.68%, दैट्स यस। अरे ये जो मैंने फ्लड फील वाले से जो लॉजिक बनाया हुआ है ना भाई, ये लॉजिक बहुत अच्छा है। मैंने एक दो अलग अलग ट्राई किए, फ्लड फील वाला आई शो यू। आई बिट, कल कल जो मैं प्रॉब्लम नहीं कर पा रहा था, आई लिटरली बिट 100% ऑफ पीपल। फ्लड फिल आई गॉट एन अपलोड फ्रॉम, मतलब अपलोड सिंबल दिख रहा है वहाँ पे। सो दिस, इसका सबमिशन इफ यू सी, सबमिट इट अगेन। सो सी बीट्स 100%। सो ये वाला लॉजिक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ा है, मतलब अलग अलग चीज़ों का मिक्स है। ये तो कॉमन चीज़ है ये, बट ये डीएफएस वाला लॉजिक ये बहुत ही सही है, और यही मैं हर जगह यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने उसका नाम चेंज करके check all directions किया, बिकॉज लिटरली इट, डीएफएस डजंट मीन एनीथिंग, इट्स एक्चुअली डूइंग चेकिंग ऑल डायरेक्शन, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। गौरव दुबे, प्लीज गाइज लाइक कर दो। नाउ आई एम स्टक ऑन 15, आई थॉट आई रीच द 20 लाइक्स का गोल बिकॉज आई हैव completed 5 problems now. If you guys want me to stream again, or like we can solve the problems together, because I'm seeing many people are saying मेरे को करना है लेकिन I'm not doing it, I'll start from tomorrow. No, today, tonight only we have to do it. So let's start, let's do it together, and for that you have to like the stream. So please do like the stream guys. Gaurav Dubey gave the thumbs up. You may like the stream Gaurav bhai, if you liked like this बकचोदी। लिटरली मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई ये लीट कोड हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसका क्या मकसद क्या है, मतलब क्या मिल रहा है अपने को ये करके? कुछ नहीं मिल रहा, इट्स पॉइंटलेस। ये प्रॉब्लम में हम अपना सबमिशन सही नहीं है। आर यू अ स्टूडेंट और अ जॉब अरे भाई, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम अ फ्रंट एंड गाय। आई मोस्टली वर्क ऑन एंगुलर, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट। ये मेरे बाल बहुत ख़राब दिख रहे हैं।
भाई कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्रीजेस, लौड़ेगा कॉग्निटिव एबिलिटी भाई। अदरवाइज नहीं तो ब्रेन रॉट कंटेंट देख के दिमाग टोस्ट हो जाता। तेरे को क्या लग रहा है कि मैं स्ट्रीम के बाद ब्रेन रॉट कंटेंट नहीं देख रहा हूँगा? मैं स्ट्रीम बंद करूँगा और 1 घंटा और ब्रेन रॉट कंटेंट देखूंगा। ब्रेन इज ऑलरेडी रॉटन ब्रो, ब्रेन्स आर रॉटन। प्ले चेस, ये क्या हो गया? प्ले चेस गेम, एक चेस गेम कर ले, मज़ा मज़ा आ गया, रिचार्ज हो जाएगा। नहीं तो कंटेक्स्टो वाला गेम खेल ले एक, प्लीज़। कंटेक्स्टो क्या है बता, कंटेक्स्टो बता बता, खेलते हैं। खेलने के लिए हम ऑलवेज रेडी है। ये क्या है कंटेक्स्टो? How to play? Find the secret word. You have unlimited guesses. The words were sorted by artificial intelligence algorithm according to how similar they were to the secret word. After submitting a word, you will see its position. The secret word is number one. The algorithm analyzes thoughts of text. It uses the context in which words are used to calculate the similarity between them. यार मेरा ये मॉनिटर मॉनिटर जवाब देना चालू कर दिया। व्हाट्स रिटन ऑन द स्ट्रीम डिस्प्ले? क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड या क्वेश्चंस दैट आई सॉल्व्ड बट मैंने उसको अपडेट नहीं किया। अरे यार मेरा भाई मेरा मॉनिटर बहुत हीट हो गया है शायद, इट्स फ्लिकरिंग राइट नाउ। टाइप अ वर्ड, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट एनिमेशन ओनली, calculating, oh sorry I don't know this word, so maybe LeetCode. Do you know LeetCode? I'm sorry I don't know this word 3581, so we are ranked 3581, so we have to go up, so maybe later. If I write later dragged us down, so later is wrong, so maybe alphabet alphabet also dragged us down, so we are going in the wrong direction. Just write any word. व्हाट्स रिटन ऑन द सिम? क्वेश्चन जो सॉल्व किया। आई थिंक फालतू चीज़ें पढ़ने की आदत डलवाने के लिए, बट गेम जैसा है, लेवल हार्ड, कभी कभी ही मज़ा आता है। कलर वगैरह कुछ ट्राई कर। हाँ तुम लोग बताओ भाई, चैट यू से द वर्ड एंड विल से हु रैंक्स द टॉप। ओके, नो, माई वर्ड इज रैंकिंग टॉप, माई वर्ड इज वर्ड लिटरली करेक्ट। ओ शिट, करेक्ट तो बहुत दूर है। ओ शिट शिट, ओ शिट वर्ड डजंट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। तुम लोग बताओ यार, तुम लोग बताओ कोई गेम, सॉरी गेम बोल रहा हूँ, वर्ड। गेम ट्राई करे इसमें, गेम। ओ गेम इज 42,000। सो कोई रिलेशन नहीं है क्या इसमें? ओ येलो 437 ब्रो, सो दैट मीन्स इज इट अ कलर? नो यार मेरा डेस्कटॉप फ्लिकर हो रहा है यार। ब्लू है रिलेशन ब्रो। ओके ब्लू ट्राई करे। ब्लू नहीं, ब्लू दूर है। येलो के पास क्या है? ऑरेंज या ओके, इट्स अ कलर देन। ऑरेंज के पास क्या है और? नो नो, जो चीज़ है वो येलो है, लेकिन ऑरेंज 109 दिखा रहा है ना, तो क्या येलो सन? और सन इज़ वेरी फार, ऑरेंज इज़ क्लोज। मे बी इफ आई राइट ऑरेंजेस, द वर्ड ऑलरेडी गेस्ड। कैन आई डिस्कनेक्ट इफ स्क्रीन बर्न्स? ये इंग्लिश में क्यों हो रहा है? स्क्रीन बर्न ना हो जाए, डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते क्या? फ्रूट, तुम लोगों को भी दिख रहा है क्या फ्लिकर?
तुम लोगों को भी फ्लिकर दिख रहा है क्या? हाँ यार, मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है। एक सेकंड में डिस्कनेक्ट, लेकिन ओबीएस सेटअप फकअप हो जाएगा। इट फक्ड अप। फ्रूट थोड़ा दूर चला गया। बट यू शुड टेक केयर ऑफ द स्क्रीन ब्रदर। यार, आई थिंक आई शुड stop the stream now. It's almost 2:15 and we have solved 5 questions, so that's too much. If anybody haven't liked the stream, please do like the stream. My desktop is like burning now at this point and I should stop because I guess it overhit or something. I don't want to lose my desktop. So see you guys tomorrow. So please do like the stream, and if you haven't liked the stream, it's a loss for me, not for you. Guys, guess करो। जल्दी से गेस मारो तो इसको भी खत्म, इसको भी एंड दे देते हैं ना एक। ऑरेंज क्या? Guys, please like the stream. I have solved almost 5 questions, and if you want me to, yeah, bye, yeah, bye you, good night guys, good night। जिसको एक वर्ड गेस करके जाओ यार। अर्नव, गेस द वर्ड, गेस द वर्ड एंड विल एंड द स्ट्रीम। वेट, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। गेस द वर्ड एंड विल एंड द स्ट्रीम। ऑरेंज, ऑरेंज के साथ क्या करता है ऑरेंज? चलो चले गए, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून टुमारो। इफ यू guys want to see my ugly face again, then do like the stream, so I'll pop up in your feed. Till then, take care, bye bye, and keep solving the questions, and we'll meet again. Good night, bye। दिल का जो हाल है जो तुम्हें कैसे बयां करे, कहने को दिल मेरा। It was a good stream. I really liked. It was a really good stream. दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, माने ना बेशरम बिल्कुल खटारा है।